Yes, very good morning, my dear friends. Guys, good morning. Right, come on. So, friends, we have been dealing with the topic of income from salaries. In that, little bit discussion is just pending, just few, hardly some 4 or 5 points to talk. If we discuss that, we'll be done with salaries. So, we'll spend little bit time on salaries and close it. And after that, today we'll spend some very good time on discussion about some interesting deductions which are pending. I mean, almost 80% of the topic is over, but 20% is still pending. Some more interesting points are there which may come in the exam. Why should we take a chance with them also? Let's complete that also. We have been doing till now perfectly. Let's complete also perfectly. Are we clear? Let's proceed. So what is the last thing we discussed yesterday? Exactly. Before that, we spoke about something called ESOP. Friends, chalo guys, what is section 1010? Gratuity, 1010A. Pension, very good, 1010AA. Leave encashment, 10.5. Leave travel allowance or leave travel assistance. Or leave travel concession. Good. 10.7. Allowance profits paid by government of India to an Indian citizen working outside India is exempt. Good. What is section 1013A beta? HRA. Exemption will come only when the employee stays in rented house and is paying rent. And exemption is least to the following is exempt. First one, actual HRA received. Second, rent paid minus 10% of salary. Third, 50% of salary of houses in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Any other place, 40% of salary. 40% other than Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata बोलने से अच्छा तो फिर 40 क्यों बोला? अब तो किसके लिए क्या? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं क्या? क्यों भाई? फटाफट तुरंत बोल देते सब चीज. So clear with this point, everybody? Guys, what is section 1726? ESOP or sweat equity shares. The difference between market value and issue price will become taxable. Correct, my dear friends? And we will see the fair market value on the date of exercise of option. I repeat again, we will look at the fair market value on the date of exercise of option. And that day, what is the fair market value? Average price, which is nothing but opening plus closing divided by 2. Clear, my dear friends? And if the shares are traded in more than one stock exchange, we will look at that stock exchange which records highest volume of trading. Yeah, not BSE or NSE specifically. We'll look at that stock exchange which records highest volume of trading. I'm sure we are clear with this point, everybody. Dosto, done. Next, my dear friends, in this topic, we also spoke about some interesting allowances. I'm sure we remember the limits now perfectly. Yes, guys? Come on, children education allowance. 100 per month per child, maximum 2 children. Children hostel allowance. 300 per month per child, maximum 2 children. Tribal area allowance. 200 per month. Underground. 800 per month. Correct, my dear friends? Guys, come on, reply. Then highly active field area. 4,200. Counterinsurgency. 3,900. Island area allowance 3,250. Correct, friends? अच्छा flow में चले गया वो. Transport allowance fully taxable. Exemption is only for blind, deaf and dumb, orthopedically handicapped. 3,200 per month. Good, very good. Friends, I hope we got a good clarity on all this allowances story, no? And perquisite, rent-free accommodation, all that story is clear, no? And I'm sure we got a clarity on what is allowance, what is perquisite. And we will not give this kind of horrible answer in the exam for sure. Is that clear? Wonderful, guys. Come on. So, yesterday, my dear friends, last night only one point about something related to Provident Fund where there is a contribution more than. क्या हो गया इसको? लेके आओ. आईपैड एग्जाम है, लैपटॉप भी एग्जाम है, कार भी दे सकते हैं आप, बाइक भी दे सकते हैं आप. नॉट कवर्ड इन डेफिनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी. वो तेरे को देख के बोल रहा है, उसको आता बोल रहा है पूरा. ठीक है सर, गेट बैक इज. सो व्हेन देयर इज अ कंट्रीब्यूशन more than what beta? 2.5 lakhs. Excess contribution. Are we taxing the excess contribution? What are we going to tax? We are going to tax the interest on
excess contribution. And the story has come only after 1/4/21. Correct, my dear friends? And if there is no employer contribution, this 2.5 lakhs limit has become. So technically, if you ask me an example, so where can there be a case where there is no employer contribution? I'll give a classic example, but it will not work practically. The classic example will be public provident fund, where there is no employer contribution. But that PPF, this will not work because practically in PPF, you can't contribute more than 1.5 lakh. Post office will not take also. 1.5 lakh ऊपर लेते ही नहीं वो. So where is the question of 5 lakh story? ATC yearly limit is 1.5 lakhs. And ATC, all points put together is 1.5 lakh. And practically in PPF, they don't take yearly more than 1.5 lakh. आपको याद है तो ये भी बोला था ना? I went to the bank and I went to the post office and told मेरा बेटा का और एक अकाउंट ओपन करेंगे. वो बोला नहीं 1.5 लाख ऊपर नहीं देंगे हम लोग. वो पोस्ट ऑफिस का प्रैक्टिकल लिमिट है, ये एग्जाम में पूछते नहीं. सर क्लियर है ये पॉइंट? सो दिस 2.5 lakh, 5 lakh, whatever I told you will apply for every provident fund. But practically for PPF, it logically cannot apply because you can't deposit more than 1.5. समझ में आ रहा है बेटा? Everybody, sir. Again, I'm asking one last time. Are we taxing the excess contribution? What is that we are taxing? Only the interest on the excess contribution. I think we got full clarity on this. Everyone, sir. Done. Listen. Next, my dear friends, let's look at few more small points here. Sir, there's an interesting concept in salary. Only interesting. Once upon a time, wonderful. Once the time passed, this became nonsense. I'll tell you why. There is a concept called specified employee, where they told in the law some perquisites. Sit here. I repeat again, my dear friends. Some perquisites. I repeat once again, sir. Some perquisites are taxable only and only in the hands of specified employee. Like, for example, motor car given for use, educational facilities. These perquisites are taxable only and only for specified employee. You're getting what I'm saying? But listen to me. Who is a specified employee? After you will tell kuch bhi nahi hai isme. Listen, first of all. Specified employee covers 3 cases. Case number 1. Director employee. That means he is an employee as well as he is a director of the company. Number 2. Employee having substantial interest. That means what? 20% or more. Last point, which is most horrible. That is, he is drawing cash salary more than 50,000 per annum. I am sure you understood what am I trying to tell. Practically, every salaried employee is a specified employee. अरे 50,000 नहीं कमाते क्या यार साल का? हाँ ठीक है यार. सर 2,000 में ही कर तू काम. 2,000 कहते. So getting what I'm saying, everybody? हाँ? दिन का 2,000. हाँ ठीक है फिर. So are we clear with this, everyone? All of us. But just for the sake of understanding, let's write the point in the notes. ठीक है? Proceed. You can please put side heading as perquisites taxable in the hands of specified employees. Other points में ही. अच्छा, अदर पॉइंट सेटिंग लिखे ऑलरेडी आप. कल क्या लिखे थे उसमें अपन? प्रोविडेंट फंड का लिखे थे अपन. ठीक है. एग्जाम्पल क्या तू यार? अरे सिंपल लिख ले तू ही. कॉन्ट्रीब्यूशन 4 lakhs. Then interest on 1.5 lakh is taxable. Proceed guys. क्या लिखाने का क्या है उसमें? टू मच हाइट से हो. 1.5 लाख ऊपर जो मतलब उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है. तू ही लिख ले. एग्जाम्पल 4 lakh कॉन्ट्रीब्यूटेड, इंटरेस्ट ऑन 1.5 lakh इज टैक्सेबल. उसमें क्या एग्जाम्पल लिखाओ? प्रॉपरली लिखाने का क्या रहता है उसमें? तो फिर अच्छा इसका बोल रहा था क्या? मुझे लगा तू उसकी बात कर रहा. वंडरफुल भाई, तू चल कंटिन्यू कर. नोट्स में कितने नोट्स लिखे कल? अदर पॉइंट्स कितने हो गए? एक ही हुआ ना. नेक्स्ट पॉइंट. द फॉलोइंग परक्विजिट्स. नहीं मैं बोलता ना अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं. द फॉलोइंग परक्विजिट्स आर टैक्सेबल
The following perquisites are taxable. The following perquisites are taxable only in the hands of. The following perquisites are taxable only in the hands of. The following perquisites are taxable only in the hands of specified employee. Only in the hands of specified employee. Once upon a time it was amazing concept, but this concept is same since last 20 years. Once upon a time it was very brilliant. We used to understand specified employee नहीं check कर लो, फिर इसको tax करो. All that was interesting. But now it lost the essence of this concept. The reason because everybody is a specified employee now. 50,000 रे लास्ट पॉइंट. साल का 50,000 किसका नहीं रहता यार? पहले भी यही था, बट पहले इनकम कम था ना लोगों का. अरे लास्ट 20 साल से यही कॉन्सेप्ट है. और 20 साल पहले साल का 50,000 मतलब तब क्लैरिफिकेशन होता था ना, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय अलग, नॉर्मल अलग. बट टाइम पास्ड आउट, रूपी वैल्यू वेंट अप, बट अमेंडमेंट इज नॉट येट डन. नहीं करता मैं. Specified employee, right? A, B, C, D. A point. Provision of sweeper, SWEEPR, sweeper, gardener, watchman. गार्डनर स्पेलिंग क्या है रे भाई? गार्डन ER, उसमें क्या स्पेलिंग, क्या है, क्या स्पेलिंग पूछ रहा? स्वीपर, वॉचमैन, क्या बोला मैंने? गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट. सेकेंड पॉइंट, फैसिलिटी ऑफ गैस, electricity, facility of gas, electricity or water supply. Facility of gas, electricity or water supply. Next, third, free or concessional tickets, or concessional what beta? Tickets. Next, motor car given for use. Motor car given for use. Next, last point, free or concessional. Free or concessional education facilities. Free or concessional education facilities. Clear, friends? That's it. Next line you write, specified employee means director employee. Specified employee means director employee or employee having director employee or employee having substantial interest. मतलब क्या है बेटा? 20% or more. पता है ना? Employee having substantial interest or employee drawing greater than or equal to 20% beta. 20% or more na. Last one, employee drawing cash salary exceeding salary exceeding 50,000 per annum. Employee drawing cash salary exceeding कितना बेटा 50,000 per annum.
I hope we got clarity on this better. Everybody, sir. That's it. That's about this point. Then finally, guys, yeah. Next interesting point, listen. Sir, these are all whatever last we wrote other points. These are all those such points where 99.9999% एग्जाम आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है. बट आई विल नेवर टेल 100 बिकॉज वी कैनॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क विथ आईसीआई. कभी अचानक उठ के कुछ नया क्वेश्चन आ गया तो वी शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिकॉज सी we might leave that answer in choice and write something else. But why that fate? Imagine something you know has come, something you don't know. For example, if I don't tell you this, something you don't know has come, something you know has come, something you know has come and you're not able to do properly. But if you know this also, you can do it better. No. Why? Let's aim for a bigger number. Why talk only about passing? Passing तो हो गया, already हो गया. Is that clear? Now see, last interesting point. Sir, employer, listen very clearly. ध्यान से सुनो, please. Employer is contributing. Employer is what beta? Contributing. I repeat again. Employer is contributing to provident fund, or he might contribute to one fund called superannuation fund. It is something like a retirement benefit given to the employee, or he is contributing to a pension fund. You would have heard about practically something called NPS. सुने का कभी word? NPS stands for a National Pension Scheme. National Pension Scheme. So employer is contributing to Provident Fund or Superannuation Fund, or is contributing to what fund? Pension Fund. They clearly told in the law, all these funds put together. I repeat again. Provident Fund, Superannuation Fund, Pension Fund. Provident Fund, Superannuation Fund, Pension Fund. All these funds put together, if the contribution is more than 7.5 lakh, सिर्फ पीएफ का क्या पढ़े थे हम? सिर्फ पीएफ का क्या पढ़े थे? 2.5 lakhs. And if there is no employer contribution, 5 lakhs. दोस्तों, come on, my dear friends. In PF, what did we learn? Limit is 2.5 lakh. And in case of no employer contribution, what was it? 5 lakh. And there the excess contribution, we were not taxing the excess contribution. What we were taxing is only the interest on excess contribution. दोस्तों बराबर है? In Provident Fund, we were never taxing the excess contribution. We were taxing only the interest on excess contribution. But here you have to understand that. Let me give an example here with the numbers. Here it makes more sense. If contribution is 9 lakhs, all these funds put together, what will happen? 1.5 lakhs is what? Taxable. समझ में आ रहा है? And interest on 1.5 lakhs is also taxable. सर, कल का पॉइंट में आज का पॉइंट में फर्क समझ में आ रहा है क्या? कल का पॉइंट में क्या था? वो सिर्फ प्रोविडेंट फंड का था. उसमें क्या बोले थे? 2.5 लाख के ऊपर जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, एक्सेस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है. And if there is no employer contribution, 2.5 lakh limit became 5 lakh. And their excess was not taxed. What was taxed is only interest on excess. But here what they are telling, excess भी taxable है, interest on excess भी taxable है. समझ में आ रहा है बेटा? And this story started only in 2020. Come on, when did this story start? 2020. कल का स्टोरी कब स्टार्ट हुआ था? 2021. Friends, yes or no? Friends, speak out. Yesterday's story, what we discussed about Provident Fund, started on 1/4/2021, and this story started only 1/4/2020. And yesterday's concept, this concept never came in exam till now, in last 2 years. उससे पहले तो था ही नहीं. Last year से कभी आया नहीं. अचानक it may come. 0.001 possibility is always there. So friends, clear? We see any concept, we should always think this is important, this may come, this is important, this may come. We can never prioritize. This prioritized story at the end of the exams, at the end, during our preparation is already over, revision is already over, just 15 days before the exam. That time you come to me, I will tell ABC analysis. What is A, what is B, what is C. But till that time, I will never talk a word called which is A category, B category, C category. Till that time, every day I will tell only one line. Every class is important, every line is important. Because we can never know. If I tell that ICA has been always asking clubbing set off, हर बार पूछ रहा एग्जाम में, उनका दिमाग सटक गया इस बार. क्लबिंग नहीं पूछे, सेट ऑफ नहीं पूछ रहे, सीधा TDS 6 मार्क या डिडक्शन पे 6 मार्क, सैलरी 10 मार्क. नहीं होगा ऐसा, ये तो नहीं होता. बट
सर समझ रहे ना आप लोग? तो अचानक जब मैं चेंज बॉस, देयर इज नो ब्लूप्रिंट पैटर्न, नो कितना ही पूछेंगे इससे, उसकी मर्जी है. हमेशा हम सोचते थे सेट ऑफ से क्या 6 मार्क आ रहा है, इस बार 6 मार्क आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं. नेक्स्ट टाइम वापस 6 मार्क को आया. फिर सोचे अरे 2 अटेम्प्ट से 6 मार्क आ रहा है सेट ऑफ, ऐसे कैसे आएगा? अगले अटेम्प्ट वापस 6 मार्क को आया. फिर फैकल्टी स्टार्टेड टेलिंग ऑन यूट्यूब, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, एवरी टाइम कमिंग इन एग्जाम फॉर 6 मार्क, नेक्स्ट अटेम्प्ट केम ओनली फॉर 2 मार्क. अब बोलो यूट्यूब में क्या बोलते हैं भाई? प्लीज नेवर जज. So clear, my dear friends? Come on. So in case of provident fund, pension fund, superannuation fund, in all these funds put together, if we contribute more than what beta? 7.5 lakhs. What is taxable? Excess is taxable and also interest on excess is taxable. इधर तक तो समझ में आ गया ना? But एक छोटा सा problem है इधर. That what is that? I'll tell you. Small concern what we have in this concept which goes like this. The reason being, you have to understand one point. When there is a contribution made, let us say 9 lakh. 9 lakhs is there in that fund only. सर हमने एक फंड बनाया सर, ये फंड में 9 लाख चले गया, 9 लाख से फंड में ही है. दोस्तों ये 9 लाख पे इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी पैसा फंड के अंदर ही है, वो भी पैसा फंड के अंदर ही है ना सर. Then law told, how do we find out how much is taxable perquisite? For that they told, don't worry, we'll give you one formula. We'll give you one formula for finding out what is the taxable perquisite. TP stands for what beta? Taxable perquisite. Clear, my dear friends? Where they told PC divided by 2 into R plus PC1 plus TP1 into R. Don't worry. Don't try to mug up the formula. First understand. Then we will see what is the story. First let's understand. Clear, my dear friends? Listen very clearly. PC stands for principal contribution. Principal contribution. More than 7.5 lakhs in current year. समझ में आना बेटा? Clear, my dear friends? And R refers to return divided by fund average. Return divided by what? Return means what? How much return you got on that fund. For example, fund का opening balance 10 लाख था, fund का closing balance 12 लाख है, 2 लाख is your return. 2 lakh divided by fund average balance, opening balance plus closing balance divided by 2. अरे fund average मतलब fund average is nothing but opening plus closing divided by 2. So when you got 2 lakhs return, and what is the opening balance in the fund? Closing balance in the fund divided by 2, you will get fund average. Your return divided by fund average will get you rate of return. No, it's nothing but rate of return only. No sir. Friends, मैंने FD में 10 लाख रुपए लगाए, 1 साल के बाद 11 लाख हो गया, 1 लाख रिटर्न है मेरा. What is the rate of return? 10%. हो गया ना बेटा? Friends, speak out. Everyone, sir. Friends, please reply. Sir, 5 लाख कैसा हुआ? ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस भी 10 लाख है, समझो. 10 plus 10 divided by 2 will become 10 only again. Sir, clear है? Everybody, sir. Next. Listen. PC1. Principal contribution more than 7.5 lakhs. More than 7.5 lakhs. In earlier previous year, other than current year. अरे लैंग्वेज समझे क्या? PC1 is principal contribution. सर अभी 22-23 में 9 लाख कंट्रीब्यूट किए, तो PC तो 1.5 लाख हो जाएगा. उससे पिछले साल भी 8 लाख कंट्रीब्यूट करे, तो पिछले साल में 50,000 भी है, वो फंड में 50,000 है जो टैक्सेबल वाला कंपोनेंट है, तो उस पर भी इंटरेस्ट आएगा ना. अरे मैं आपको इसलिए बोला था स्टार्टिंग में ही, whenever we are contributing money into a fund on which is more than 7.5 lakh, excess will become taxable. और एक्सेस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल है. और ये पूरा का पूरा पैसा किधर है? फंड के अंदर ही है. विड्रॉ करे क्या? स्पीक आउट. सर सुन रहे क्या आप लोग? स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन. व्हाट इज पीसी स्टैंडिंग फॉर?
principal contribution. What is R standing for? Return divided by fund average. So PC1 is what? Principal contribution more than 7.5 lakh. TP1 is taxable perquisite in earlier previous year other than current year. Obviously ना यार, सर आप लॉजिक समझो बेटा, लॉजिक समझो, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल पॉइंट. सर लेट्स से देयर इज 100 रुपीज कंट्रीब्यूशन. हाउ मच द कंट्रीब्यूशन इन प्रीवियस ईयर्स? करंट ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स में 100 रुपए कंट्रीब्यूशन है. कितना कंट्रीब्यूशन है? 100 रुपए. उसमें 25 रुपए टैक्सेबल है. ये 25 रुपए जो टैक्सेबल है वो किधर बैठा है? फंड के अंदर ही बैठा है. बोलो भाई, अगले साल जब इंटरेस्ट आएगा, जो पुराना 25 रुपीज है उस पर भी इंटरेस्ट आएगा ना, और करंट ईयर जो कंट्रीब्यूट करे उस पर भी इंटरेस्ट आएगा ना. एक्ट बोल रहा है करंट ईयर 1.5 लाख, करंट ईयर जो 7.5 के ऊपर है उसका इंटरेस्ट को भी टैक्स करेंगे. पुराना जो पैसा फंड में बैठा है जो 7.5 लाख के ऊपर है उसका भी इंटरेस्ट को टैक्स करेंगे. मतलब दिस स्टोरी इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी टिल द टाइम यू विल नॉट विथड्रॉ. करेक्ट आंसर. दिस स्टोरी बिकम नेवर एंडिंग स्टोरी टिल द टाइम यू डोंट विथड्रॉ. क्योंकि जब तक वो चल रहा है फंड में बैलेंस, तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट चलते जा रहा ना भाई. और एक्ट क्या बोल रहा है? तेरा पूरा इंटरेस्ट को टैक्स नहीं करेंगे हम. कितना इंटरेस्ट को टैक्स करेंगे? जितना 7.5 लाख ऊपर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है उसको टैक्स करेंगे. उसके लिए जो सोच समझ के सब फॉर्मूला बनाए. सर समझ में आ रहा है क्या बेटा? स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स, एवरीवन सर, ऑल ऑफ अस. सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स टेक सिचुएशन लाइक दिस माय डियर फ्रेंड्स. 22-23, let us say contribution is 9 lakh. How much is the contribution? 9 lakhs. Earlier previous years, contribution greater than 7.5 lakh is, let us say, 4 lakh. मतलब 11.5 लाख किए भाई. So speak out my dear friends. And taxable perquisite for earlier previous year was, let us say, 2 lakh. Are we getting clarity? Speak out my dear friends. And what we want is R. How do we calculate taxable perquisite for financial year 22-23 beta? What is the current year principal contribution? PC by 2. What is PC? Principal contribution. What is principal contribution? 9 lakhs. But I will not take 9 lakhs. I will take only 1.5 lakhs divided by 2 into R. Let us say R is equal to return divided by fund average balance. Yes, sir. So speak out. Let us say this figure is 3%. So multiply by what? 3%. Plus PC1. What is PC1? 4 lakhs. ये वाला बेटा. Plus what is TP1? 2 lakhs. Into what? That's it. That becomes your value of perquisite. Are we getting clarity, my dear friends? The whole logic you have to understand very clearly is that government is telling we will tax the figure which is more than 7.5 lakh, and we will also tax the interest figure what you are getting on the figure more than 7.5 lakh. And since everything is sitting in the fund only, they derived a formula like this. And they are trying to multiply the interest with average balances. So getting clarity, everybody? Friends, speak out. Don't try to get a number calculation, boss. Understand the concept first. So are we clear with this? Everyone, sir. Yeah? Chalo. Please put the title in your book. Other points मत लिखो, इसको अलग टाइटल बनाते. Section 17(2)(7)(a. बोलो बेटा, किधर है साउंड? प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो उस पे. वो तो फंड में ही है ना, उस पर भी इंटरेस्ट आ रहा ना तुमको. और 2 लाख को अपन किधर टैक्स कर रहे हैं वापस? 2 लाख पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको टैक्स कर रहे हैं ना. आप समझो फॉर्मूला को. सर वी आर नॉट टैक्सिंग 2 लाख अगेन, वी आर टैक्सिंग ओनली व्हाट? इंटरेस्ट ऑन द 2 लाख, बिकॉज द 2 लाख ऑलरेडी देयर इन द फंड. वो फंड में से अगर उठा देते थे तो नहीं होता था ना टैक्स. हाँ, वो भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है. ईयर के बीच में भी
क्या कर सकते? समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? अरे ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम. राइट नाउ द अमाउंट heading contribution to RPF, NPS, contribution to RPF, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम. अपन थोड़ा पूरा ध्यान से दे तो सब सुनाई देता. इफ यू आर इन आत्मा परमात्मा मोड, becomes difficult. Contribution to RPF, NPS and superannuation fund. Contribution to RPF, NPS and superannuation fund. Student is asking one question. Sir, year की बीच में contribute करें तो average कैसा निकालेंगे? Act is silent about it, my dear friend Parth. So we will go by the basis of same formula only. We cannot change it. And they have never given a law based on your own mathematical calculation. They have given a formula telling, please follow this and take the fund average balance. It doesn't matter year की बीच में, year की starting में. First year में zero रहेगा. नहीं, we can take the fund opening balance as starting balance then. Not a problem. Done. चलो बेटा proceed. Write in first one line. The amount. मैं पहले पॉइंट बोल रहा हूं, लिखो. The amount or aggregate of amounts of contribution, the amount or aggregate of amount of contribution to RPF, NPS, superannuation fund, by an employer to the account of the employee in excess of 7,50,000. In excess of 7,50,000 shall be taxable. As per section 17(2)(7). As per section 17(2)(7). स्टार्टिंग सिर्फ 7 ही लिखे ना. मैं एक काम करो, स्टार्टिंग में 17(2)(7 प्लस ऑलरेडी 17(7) ही लिखे ना आप लोग, प्लस 17(2)(7 भी लिखो. अरे इतना ही बॉन्ट है यार. 7.5 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा को टैक्स कर रहे ना, 7.5 के ऊपर एक्स्ट्रा को टैक्स कर रहे ना, दैट इज गिवन बाय 17(2)(7. इंटरेस्ट को भी टैक्स कर रहे ना, दैट इज 17(2)(7 ही. ठीक है ना. एज पर सेक्शन 17(2)(7. नेक्स्ट लाइन. एनुअल अक्रीशन. एनुअल व्हाट बेटा? अक्रीशन मतलब क्या? इंटरेस्ट रिटर्न. एनुअल अक्रीशन related to employer's contribution annual accretion related to employer's contribution which is in excess of 7.5 lakh. Got the language, no? Annual accretion to the employers, related to the employer's contribution which is in excess of 7.5 lakhs is also taxable. अरे लैंग्वेज मीनिंग समझ गए ना आप लोग? is also taxable.
Interest on the figure which is more than 7.5 lakh is also taxable. Is also वो भी taxable, ये भी taxable. Is also taxable as per section 17(2)(7)(a). ठीक है ना बेटा दोस्तों? नीचे एक एग्जाम्पल करके ये लिख लो पहले. अभी जो 2 लाइन लिखे ना उसका मीनिंग ये है. अभी जो 2 लाइन लिखे थे उसका मीनिंग ये है. एंड दिस इज गिवन बाय 17(2)(7). And this is given by 17(2)(7)(a). वो लिखेंगे अपन. ये लिख दिया क्या पहले? नेक्स्ट लाइन राइट. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ annual accretion, annual what? But accretion means interest. Annual accretion which is taxable. For determination of annual accretion which is taxable, come on, formula is prescribed in rules. Formula is prescribed in rules. Formula is prescribed in rules. दोस्तों क्लियर है? फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड इन व्हाट बेटा? रूल्स. ये फॉर्मूला क्या? हाँ रूल्स में ही है. बेयर रूल्स, बेयर एक्ट ने बेयर रूल्स. डन. राइट बिलो. ये फॉर्मूला मैंने बनाया में. राइट बिलो टीपी इज इक्वल टू you write as it is. TP is equal to, no, this language properly I will tell, more neatly I will tell. TP is equal to PC by 2 into R, PC by 2 into R plus in the bracket PC1 plus TP1, PC1 plus TP1 into R. Clear? This what is PC1 and all I will tell you in more detail. मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो. TP is equal to what beta? Taxable perquisite. Correct? No. TP is equal to taxable perquisite for current year. TP is equal to taxable perquisite for current year. PC is equal to simple line I will tell. Current year employer contribution. सलाम समझे क्या लैंग्वेज? सिंपल लैंग्वेज. करंट ईयर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख. क्लियर नो? करंट ईयर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख. ठीक है. नेक्स्ट PC1 is equal to employer contribution in excess of what beta? Exactly. Employer contribution in excess of 7.5 lakh in क्या previous year बेटा? क्या नॉनसेंस है previous year? In preceding previous years. अरे previous year तो पहले लिखे ना PC. In preceding previous years. On or after, that's it. On or after 1/4/2020. क्योंकि पहले तो टैक्सेबल ही नहीं था ना, तो पहले का क्यों कंसिडर करेंगे आप? In preceding previous years, on or after 1/4/2020. Next, this is PC1. Next, TP1 is equal to
taxable perquisite, for preceding previous years. सर कॉमन सेंस की बात है, अपन टीपी निकाल रहे तो टीपी 1 में करंट ईयर का नहीं आएगा ना बेटा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फॉर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर्स ऑन और आफ्टर 1/4/2020. बचा क्या अभी? आर इज इक्वल टू current year return on the fund, current year return on the fund, कितना पैसा आया? by current year return on the fund by fund average balance. current year return on the fund by, रवि भाई मतलब मैं बोल रहा हूं पागल है क्या रे सुजल? बाई फंड एवरेज बैलेंस, बाई वी बाई लिखते क्या? दोनों के दोनों डेंजर लिख रहे क्या आंसर? थोड़ा तो सोच के लिखो ना यार. और अभी भाई बोल रहा तो लाइन ड्रॉ कर रहा है. अरे क्लियरली बता, भाई लिखो यार. बस यही काम करो. करंट रिटर्न ऑन द फंड बाय, स्टूडेंट बोलता है सर आपको डिवाइडेड बाय बोलना चाहिए. ठीक है, मैं ही लिखता तुम्हारा एग्जाम, तो क्यों लिखता फिर एग्जाम? तू जाके बीकॉम ही कर, सीए क्यों कर रहा है फिर बोलता हाँ सर, ये सब फालतू डायलॉग बोलने में तो रेडी है. क्या बोला था रे भाई? करंट हो गया क्या? बाय फंड एवरेज बैलेंस, दैट्स इट. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, दैट्स इट. इसका कुछ पॉइंट नहीं है. सर वी क्लियर एवरीबॉडी? सर ये समझ में आया क्या तो आपको? सर ये आज तक एग्जाम में आए नहीं कभी, बट आई वांटेड टू डिस्कस सो दैट बाय एनी चांस इफ इट कम्स वी शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. सर वी क्लियर विद दिस? एवरीवन सर try to fundamentally get the logic very clearly that more than 7.5 excess they are taxing. On the excess, whatever interest we get, that also is being taxed. And everything is getting accumulated in the fund only. Since everything is a part of the fund, they derived a formula like this to tax it. You're getting my point, everybody? Dosto? Done. That's about the story of fund average balances, what we just discussed. And we spoke about something called, this story will come only, which is taxable, more than 7.5 is taxable. Aggregate of which all funds? Provident fund, superannuation fund, national pension scheme, all put together more than 7.5 lakh. Excess will become taxable. And interest on excess is also taxable. Are we fully clear? Everyone, sir. Pakka. Chalo, open a material. Interest के लिए, obviously. प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला की जरूरत क्या है? जितना कंट्रीब्यूट किया 7.5 के ऊपर टैक्सेबल है. इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला दिया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पूरा पैसा फंड में ही है. लास्ट ईयर का जो 7.5 के ऊपर पैसा है वो भी फंड में ही है ना, तो इस साल इंटरेस्ट, उसी पे भी इंटरेस्ट आ रहा ना, तो उसको भी टैक्स करना चाहिए ना. प्योर मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो, कुछ नहीं है वो. फर्स्ट मॉड्यूल. आर वी क्लियर? Guys, please reply. Everybody, sir. I know that. I know that. डिस्कस करेंगे ना एक बार, ये हो गया ये. इतना तो समझ नहीं आया. Open page number 57, guys. Page number 57. Sir, almost a week ago, last Monday, I remember that we started off with income from salaries. तेरे को और कुछ कॉन्सेप्ट कुछ है तो बोल. Done. See now. We discussed about charitability section for salaries, and after that, sir, yesterday we spoke about something called arrears of salary. Can you please see that in next page, guys? Employee can claim relief under section 89. याद है relief? Tax on current year including arrears,
tax on current year excluding arrears, tax on that year including arrears, that year excluding arrears. इसका difference निकालो, इसका difference निकालो. Difference of difference is relief if it is positive. बराबर है बेटा? Next. Employer relationship याद है ना बेटा? Direction, supervision and control. And next point, we always discuss that MD is always an employee. And whatever MPs, MLAs gets, we always tax under income from other sources. Because that ship is not there. What ship? Relationship. What relationship? Employer-employee relationship. Then, I want you to look at page number. Leave encashment is done. Gratuity we discussed 20 lakh, covered under Gratuity Act. And we have got charts on every page for all the retirement benefits. Already in the class also we prepared charts only. But if you want to go through, you can go through. Class वाला ज़्यादा easy है. ये भी अपन ही बनाए रहे. अभी बात करेंगे. Please open once page number 68. Please open once page number 68. Page number 68. So please see that. Sir, in exam, generally gratuity, pension, leave, salary, these only will come in exam. This 1-2 concepts what I will talk now, something called retrenchment compensation, voluntary retirement compensation, never came in exam in last 10-15 years. But 10 साल पहले एक बार retrenchment compensation exam में आया था. Somewhere in 2006 or 7. So almost 15 years back. So history can come again. When I was studying in 2010, I was focusing a lot on this because मेरे एग्जाम से 2 साल पहले एग्जाम में आया था. बट उसके बाद कभी आया नहीं, आज तक कभी आया नहीं. बट फिर भी एक बार देख ही लेते. क्या क्या? Sir, 1010B is what? Retrenchment compensation. First of all, you please tell me what is the meaning of retrenchment? अरे कम से कम डायग्राम देख के तो इंटरप्रेट करना रे. क्या पता नहीं यार. Retrenchment is something like firing out, where employee has been removed. Voluntary retirement is he is only going. Retrenchment is employer told get out. That's called retrenchment. See now. Compensation paid under Industrial Disputes Act issued under any law. What is exempt under 1010B? First one, what actually we got? ये तो common है सब जगह पे. Second limit 5 lakhs. Third one, amount calculated as per provisions of Industrial Disputes Act, which says, how do we calculate as per Industrial Disputes Act? More for knowledge because that Industrial Disputes Act is there. 15 days salary based on what, my dear friends? Average salary of last 3 months for every completed year of service or part exceeding 6 months. So it is something like 15 by 26 into average salary into number of completed years or part exceeding 6 months. वही हो गया ना बेटा? See next line. Above limits will not be applicable to cases where compensation is paid under any scheme approved by central government for giving special protection to workmen under certain circumstances. Generally, government brings lot of rules for people working in a factory to protect their rights. For example, sometimes employer is telling an employee in the factory, get out right now. That employee can file a suit in the court of law, telling you cannot remove the employee just like that and throw him outside. You have to give some notice to him. As per Industrial Disputes Act, you have to give at least 2 months notice. कम से कम 2 महीने पहले उसको बोल के या निकालना है. Unless there is a fraud, there is a misappropriation, or there is some kind of negligence. Getting my point, everybody? Next. What is average pay? In case of monthly paid workmen, sir, आपको लेबर चैप्टर खत्म हो गया. आपको पता है पीस रेट, वेज रेट, सुने ना? हाल से रोवन छोड़ो यार. See now. In case of monthly paid workmen in 3 complete calendar months, so 3 months average will take. Getting my point? Weekly paid workman 4 calendar weeks. Daily workman 12 working weeks. And if he has not worked above period, average of the wages payable during the period he actually worked. So getting my point? अगर मंथली काम कर रहा है तो क्या करेंगे बेटा? मंथली सैलरी पे करे तो उसको 3 मंथ्स का एवरेज लेंगे. वीकली है तो
4 हफ्ते का एवरेज डेली सैलरी अगर उसको दे रहे तो 12 फुल वर्किंग वीक्स का एवरेज. So getting clarity everybody? Speak out. And wages means what? Any remuneration payable, including any kind of monetary benefits, but does not include what? Bonus, contribution to retirement benefit scheme, or any gratuity payable on what? Termination of service, when it's thrown out of service. Clear, friends? But I want you to keep in mind, highlight that word called 5 lakhs. Actuals or 5 lakh or this limit of 15 by 26 into average salary into number of company years of service or part exceeding 6 months. Gratuity, why only 20 lakh? Leave salary, why only 3 lakhs? एक्चुअल तो याद रखने का क्या पॉइंट है? एक्चुअल में याद रखने का क्या पॉइंट है? हाँ बोलना बेटा. Compensation received on termination of employment, yes, something like that. But if it's a part of the course of employment, then it will come here. Next, 10(10)(c) is what बेटा? Voluntary retirement. मतलब क्या है बेटा? सुनेगा कभी VRS? Voluntary खुद चले गया. चलो, exemption is allowed only once in lifetime. Obviously, कितने बार voluntary retire करता तू? Exemption is least of the following, sir, 4 points. Least of the following 4 points. First 2 points already पता है अपने को. Actual 5 lakhs. ये तो same like previous one, no? दोस्तों, first part is actual, second part is 5 lakh. What is the other point you see? Last on salary into 3 into number of years of what? Completed service. Last one, last on salary into, this is very interesting, balanced number of months of service left. That question only will tell you if they ask. The reason being very clear, my dear friends. In some states, the retirement age is 58. Some states it is 60. Some states 55 also. तो अपने को क्यों दिमाग चलाना है कौन से स्टेट में क्या है? वो क्वेश्चन खुद बताएगा. सर्विस कितना बच गया और? It is 60 here. There it is 58. महाराष्ट्र 58 है, तेलंगाना पे 58 है. So clear everybody? Come on, what are the limits? First one, actuals. Second, 5 lakhs. Third one, last on salary into 3 into number of years of completed service. Last limit, last on salary into balance number of months of service left. Are we getting clarity everyone? Next to see what is salary. Basic plus DA plus commission percentage of turnover. क्या मतलब है इसका? Same like HRA. So are we getting clarity everybody? First point is very important point, only for knowledge, but please see. It applies to an employee who has completed what? 10 years of service or has completed what? But this requirement is not applicable in case of employee of what? Under a scheme of voluntary separation framed by the company. I hope we are getting clarity everybody. All of us guys, please reply. Come on, what is 10(10)(c)? Voluntary retirement. Let's recall, come on, what is 10(10)? Gratuity. 10(10)(a). Pension. 10(10)AA. Leave encashment. 10(10)B. Retrenchment compensation. 10(10)BC. Compensation on account of disaster. 10(10)C. Voluntary retirement. 10(10)CC. Tax paid by employer on non-monetary perquisites shall be exempt in the hands of employee. Sir, I hope we are getting clarity everybody. Guys, are we clear with the story everyone? First point, this concept of this voluntary retirement scheme where benefit they are giving compensation will apply only to that person who has completed at least 10 years of service or has attained the age of 40 years. But this condition of 40 years, 10 years will not apply in case of employee of what? Public sector company under a scheme of voluntary separation framed by the company. Classic example for public sector company is your NTPC, Power Grid, National Thermal Power Corporation, ONGC, BPCL. क्या बात है? हंसक्यों रहे? पावर ग्रिड का क्या संबंध है सात्विक को? पावर ग्रिड क्या रे? हाँ?
ठीक है, got the point? No, done. And these all points are just for your understanding of the concept. That's it. In terms of the vacancy caused by voluntary retirement must not be filled up. पहले जो बात डिस्कस कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दे. आदमी शादी करते वक्त मंडप पे शादी के बारे में सोचना चाहिए. अरे बोलो सर डिडक्शन में थोड़ा लिखना बाकी है ना. अरे पहले जो खत्म कर रहे हो वो तो करने देना यार. अरे बहुत डेंजर वर्ड है. नेक्स्ट 1010cc, ये तो याद है ना बेटा. टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स इज एग्जाम्प्ट टू द आंसर ऑफ व्हाट? एम्प्लॉय. नेक्स्ट अलावेंस एचआरए पता है सर, ये तो अपन ऑलरेडी जानते दोस्त. Who is covered in government in the tables you prepare, tables we learn to know, gratuity का पेंशन का टेबल्स. बस उतना ही, उससे ज्यादा सोचो मत आप. हाँ एचआरए हो गया, पीजीपी का लिस्ट ना. ठीक है बनाएंगे पीजीपी का लिस्ट. So page number 76, I wanted to highlight this point in your notes. अभी अपन जो पढ़े थे 7.5 लाख के ऊपर का टैक्सेबल. And in that next page, you will find one chart for rent-free accommodation. I prepared that chart in PowerPoint, but already we prepared one chart in notes. So whichever you like, you look at it. Anyways, both are same. नोट्स वाला अच्छा लगा तो वही ले लो फिर. ठीक है बेटा. अरे यार अच्छा नहीं है, सीधा बोलते रहे यार. 40 मिनट बैठ के बनाया यार पीपीटी में. अरे सर सीधा मत बोलो यार, अच्छा नहीं है. ठीक है सर हम वही कर लेते. इस चार्ट्स में कितने टाइम लगा है मुझे पता है यार. अच्छा नो फीलिंग्स एंड इमोशंस. ठीक है. असेट गिवन फॉर असेट सोल्ड. ये तो मोटर कार तो मैं खुद बोलता, ये चार्ट लाइट ले लो आप. अपना क्लास में खतरनाक चार्ट बन गया एक्चुअली. वो एक्चुअली मैं बोलता, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली सर, this is one chart what I prepared when car is owned by employer. One more chart I prepared where car is owned by employee. But आपकी क्लास में I don't know how suddenly that point strike in mind where I thought एक ही चार्ट बना देते पूरा, पर एक ही चार्ट बन गया पूरा. लिटरली स्पीकिंग पहली बार मैंने ऐसे चार्ट बनाया क्लास में. एंड बहुत अच्छा आया वो चार्ट, लिटरली बहुत अच्छा आया चार्ट. एंड दैट day after that class only I thought that भाई अभी बैच खत्म नहीं हुआ रहे. अब मेरे को कुछ अभी अपने को और अब मैं कुछ बोल. ठीक है बस करो सर. लेट मी टेल यू वन पॉइंट. सर ऑनेस्टली दैट डे आफ्टर योर क्लास वाज ओवर आई एक्चुअली थॉट दैट हर बैच में ऐसे चार्ट बनाएंगे. बहुत मस्त चार्ट बना उस दिन. अनएक्सपेक्टेडली आई थॉट दैट विल डू लाइक दैट एंड इट जस्ट. ठीक है चलो लेट्स क्लोज दिस. Sir, motor car, in this material there are two charts. I humbly suggest ignore these charts and happily study that because ये देखेंगे तो जो फालतू में आपको लगेगा यार ये सब थोड़ा डेंजर है. And इसमें I want you to highlight this point. Conveyance facility to judge of High Court, Supreme Court is not taxable. Notes में लिखा है मैंने, but फिर भी highlight कर दो एक बार. Next, sweat equity shares. ये superannuation fund 7.5 lakh. ये लंच डिनर 50 पर मील, ये भी हाईलाइट कर दो बेटा.
पेज नंबर 87 में 7.5 लाख को हाईलाइट करो, 50 पर मील को हाईलाइट कर दो. ऑलरेडी लिखे हम लोग. एंड इस पे ये भी हाईलाइट कर लो लास्ट में, टी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इज एग्जम्प्ट, स्नैक्स, चिप्स, चाय, कॉफी, इस पे टैक्स नहीं है. What is snacks? They are not defined in the law. Don't worry. And gifts more than 5,000 per annum is what बेटा? Taxable. अरे मैं एक पॉइंट ढूंढ रहा हूं, तब से दिख नहीं रहे यार. मिल गया. देखो बेटा, in case of, अच्छा, but let me explain the point first. Sir, in railways, I hope you know that for railways employees they get some privileged tickets and passes. जो रेलवे में काम कर रहे, तो उनको जो रेलवेज तो उनको जो टिकट पासेस मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं है. सी द पॉइंट नाउ. इन इफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स एट फ्री और कंसेशनल रेट is provided by what, sir? Employer engaged in that business, then the value offered to other public is what beta? Taxable. It is what, sir? Taxable. But bracket में क्या दिया देखो, मतलब what is the meaning? उनके एम्प्लॉयज के लिए एग्जम्प्ट है. क्या क्लियर है फ्रेंड्स? एक वर्ड दिया होगा यार, प्रिविलेज पासेस बोल के. अरे हाँ मिल गया, तब से ढूंढ रही है पॉइंट. इसको हाईलाइट करो भाई. प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट्स गिवन बाय इंडियन रेलवेज टू इट्स एम्प्लॉयज. एग्जाम में एक बार आया था ये पॉइंट, एक 4-5 साल पहले एक बार एग्जाम में एमसीक्यू में आया था ये पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट? उसमें 3 चीज टैक्सेबल दिया, वो एक पॉइंट ये दिया था. हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, वो एलिमिनेट, ये देखते वो लगेगा टैक्सेबल, ये देखते लगेगा टैक्सेबल, ये देखते लगेगा टैक्सेबल, उससे भी मालूम पड़ता है. ठीक है. प्रोविडेंट फंड्स, सर ये पॉइंट आपको लिखा है क्या मैं नोट्स में? पीरियोडिकल जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, ऑफिस में न्यूज़पेपर्स दिए. अच्छा ठीक है, ऑफिस में न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स पढ़े रहते ना, आपके जितना पढ़ना है पढ़ सकते, कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर. अच्छा बोला था क्या? ठीक है, हाईलाइट कर लो पर. एंड रेंट फ्री रेजिडेंस गिवन टू जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसको भी हाईलाइट कर दो. क्या बेटा? उसी पे ही है. जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मस्त है वो. जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बन गए तो खतरनाक फैसिलिटीज मिलते नहीं. प्रोविडेंट फंड देखो मस्त बैठा है. And please highlight that word 2.5 lakhs and 5 lakhs in the next page. 91 bottom. 2.5 लाख 5 लाख दिख रहा है ना बेटा प्रोविडेंट फंड का. और ये टेबल का बिल्कुल मत सोचो, ऑलरेडी हमने टेबल बना दिया ये स्टार्टिंग में ही. ये अरियर्स ऑफ सैलरी का रिलीफ, ये तो अपन करे थे ना कल लिखा था आपको सिंपल वे में. नेक्स्ट, दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी फॉर इनकम फ्रॉम सैलरीज. इतना कुछ हो रहा है सैलरी. यू वांट सम रीजन टू क्लैप और व्हाट? नहीं अभी नहीं, आज ही होगा पर अभी नहीं. उसके लिए मुझे थोड़ा पढ़ाना है, उसके बाद वो उसका सेंस बनेगा. सर, you would have seen in lot of times when I sent a paper or when I sent questions in the group or when I conducted exam or somewhere in the material, you would have heard about something called 115 BAC beta. But I never taught you this, but I'll teach you that today. But I need some time to teach this because we need to understand some concepts. Then if you see this, we'll get proper clarity on what am I trying to teach. टोटल इनकम जैसा है और फर्स्ट चैप्टर में भी है ऐसे बुक में. तो ठीक है, बात करेंगे. चलो, that's called alternate tax. We'll discuss. Don't worry. Friends, are we clear with all the story, my dear friends? So with this, we closed all our 5 heads of income. Salaries is also done and every other part of that area is over. Are we fully clear with that, everyone? Guys, please reply. कर ले तू क्वेश्चन बैंक में.
तू मेरे साथ रात में बैठ, आजा रोज। अभी मैं जो खत्म करना है वो कंप्लीट करूं या तेरा टोटल इनका क्वेश्चन सॉल्व करूं तेरे साथ अभी? ऑब्वियसली नहीं। आप एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहे हैं ना कल वैसे। अरे ये क्या आदमी है रे ये, इतने बार बोला जिस चीज की बात कर रहे हो उसकी बात करेंगे। व्हाट इज इट? वो सब बाद में बात करेंगे बेटा, पहले आज का जो काम करना है वो करेंगे ना पहले। विल डिस्कस दैट नो फर्स्ट, यू डोंट वरी। नाम शिवाय, सबका देखता है सबका सोचता है, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या कुछ भी बोल रहे? ऐसे क्यों रे? अरे इसमें भी डबल मीनिंग निकाल देगा तुम लोग, पागल लोग। नहीं, get back guys. So friends, please put the heading in your book, deductions. You. चार पांच दिन से तू कैसा बिहेव कर रहा था समझ में नहीं आ रहा, सच्ची बोल रहा मैं। You have gone crazy, I'm telling you. ठीक से खाना खाए तो जिंदगी में अच्छा रहता। चलो गाइस, हाँ फ्रेश पेज पे लिखो ना, छोड़ दे उसको। Get back guys, come on. Sir, in deductions, can you please tell me what all we completed already? 80C अपन लिखते हैं उसको एक बार, 80D एक बार उसको लिखते हैं अपन, 80TTA और मैं ऑलरेडी लिखा दिया उसको, 80TTB already we wrote, GGC already we wrote, GGB is already over, and GG is also over. That is your GG is your rent paid. GGA is also over, scientific research rural development. QQB RRB मैं आपको पढ़ाया था पर ये लिखा ही नहीं था आपको, ये मैं लिखा दूंगा आज, ठीक है? And there is something called 80DD, 80U, EEE, वैसे थोड़े सेक्शन है जो आज पढ़ने का काम है, वो भी करेंगे आज। नहीं वो भी करेंगे आज, कंप्लीट नहीं हो बेटा, लिखा है थोड़ी मैंने आपको 80CCD, सिर्फ उतना ही बोला, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज टैक्सेबल, बट उसका थोड़ा कहानी भी है भाई। आई कंप्लीट डन, ठीक है ना बेटा? चलो पहले सबसे पहले सर अब एक मस्त सेक्शन करते हैं, सबसे पहले परफेक्टली उसको डिस्कस करते, देन वी विल गो टू नेक्स्ट सेक्शन। लिसन फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट द स्टोरी ऑफ 80D सर। 80D deals with what? Medical insurance. Already you have some knowledge, but some more interesting knowledge is required in this particular concept of medical insurance. Listen very clearly. First of all, medical insurance deduction is allowed only if it is paid, only if it is paid by any mode other than cash. जो रिसेंटली एग्जाम लिखे उसमें भी ये पॉइंट था ना बेटा, डिडक्शन इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। नाउ लिसन टू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली हियर। लिसन माय डियर फ्रेंड्स, एंड whoever wants to relax, they can happily go to their hotel, room or hostel, wherever they are staying, comfortably go, relax and sleep, no problem at all. Come on, what is 80D, my dear friends? Medical insurance. Deduction is allowed only if what, my dear friends? Only if it is paid by what? Any mode other than cash. Now listen very clearly. Now, there are two categories in this: self, spouse, and children. And children should be dependent children. And now stop all your nonsense of 2 children, 1 children and all. Okay? Children means children. They never told 2 children, 3 children. How many are there? That much you take deduction. This is not salary chapter. ठीक है, उधर ही वो सब नाटक है. Get back on. Self, spouse and children. And children should be what? Dependent. And for these people, all three put together
मैक्सिमम 25,000. मैक्सिमम 25,000. एनीवन सीनियर, मतलब तीनों में से कोई सीनियर है, देन आंसर इज 50,000. एनीवन सीनियर, व्हाट इज आंसर बेटा? 50,000. सीनियर का ऑलवेज मतलब है रेसिडेंट सीनियर, समथिंग लाइक टीटीबी एंड टीटीए, याद है ना? फ्रेंड्स, स्पीक आउट. दैट मीन्स व्हाट? फॉर शिवतेजा, माई वाइफ एंड माई किड्स ऑल पुट टुगेदर कितना बेटा? 25,000. बट इफ आई एम सीनियर, my wife is not senior, still 50,000. Imagine I am not senior, my wife is senior. Possible, no? In our case not possible, but generally possible also. What is the story then? Again 50,000. But don't tell reverse case. Parents are not senior, children are senior. अभी तुम एक्सेप्शन केस बोलते, अडॉप्ट कर लिए, जब बड़े वाले को अडॉप्ट किए, उसको बड़े वाले को बच्चा बना दिए, ठीक है, whatever, all that you keep with you only. Come on. Self spouse children, all three put together, कितना बेटा? 25,000. Anyone senior? 50,000. Next. For parents also, if you contribute, you can take deduction. क्वेश्चन में भी दिया ना बेटा, फादर का पे करे. Parents also, if you contribute, deduction will come. Listen. And parents need not be dependent. बात मत करो बेटा. I'll give you extra mark for that. Okay? रो मत. Come on, my dear friends. Parents, what, my dear friends? Need not be dependent. अरे not fair क्या है उसमें? दिया यार 75,000, 50,000 लेने का उत्तर है, उसमें क्या था? ठीक है, ले रे भाई. तेरे को 60 को 70 देता, ठीक है? गेट बैक. अरे यार, मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाते हुए डिस्टर्ब मत करो यार, मोमेंटम चले जाता है यार. कम ऑन. सो सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन शुड बी व्हाट? डिपेंडेंट. बट पेरेंट्स आल्सो, इफ यू पे, वी कैन टेक डिडक्शन इवन इफ यू पे फॉर पेरेंट्स आल्सो. एंड पेरेंट्स नीड नॉट बी व्हाट? Dependent. That means, I'll give a small example here, think properly and tell. If Shivateja, exactly, I was giving that example only. If Shivateja is paying for my father's life insurance, छोड़ ना बेटा, पेपर छोड़ दे. If Shivateja is paying for my father's life insurance, can Shivateja take deduction? No. Yes. अरे तुमको इंग्लिश पढ़ना आता है क्या? If Shivateja is paying for his father, I paid medical insurance for my father, can Shivateja take deduction? Shivateja's father paid medical insurance premium for Shivateja. Can my father take deduction? Answer is no, because I am not dependent on him. Children should be dependent, but parents need not be dependent. Student ask, is practically कैसे मालूम पड़ता है? Practically depends on financially dependent. And in exam, question only will tell whether dependent or not. आपको दिमाग में चलाने की जरूरत नहीं है उसमें. But आपको ये तो याद रखना है कि भाई parents need not be dependent, but children should be dependent. Are we getting clarity or not? So for self spouse children, all three put together, how much? 25,000. Anyone senior? 50,000. Parents, both put together, both मतलब mother and father, maximum 25,000. And anyone senior, 50,000. And when I say senior, what senior we are talking about? If non-resident, what will happen? 25,000 straight. तो समझ में आ रहा है बेटा? Friends, speak out. Everyone, sir. Now one more last point. With this I'll close. Deduction is also allowed for preventive health checkup. Deduction also allowed for what checkup? Preventive checkup means meaning what we know, no? Preventive health checkup subject to maximum 5,000. 100 रुपए में बड़ा हो रहा ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में, मैक्सिमम 5,000, एंड इट कैन बी पेड इन कैश ऑल्सो. एंड एग्जाम में पागल लोग लिख रहे इट शुड बी पेड इन कैश ओनली. अरे मेंटल हो गया क्या यार? थोड़ा तो यार लैंग्वेज प्रॉपर यूज करो यार. कैश ओनली में कैश ऑल्सो में कितना फर्क है यार? समझ में आ रहा है क्या?
Listen carefully now. Let me give an example. Self, 34 years old, 14,000. Spouse, 32 years old, 8,000. Children, 2,000. And preventive checkup, 4,000. And this is paid through online. This is paid through check. This is paid through Paytm. This is paid through cash. And father aged 64 and they paid 24,000. And this 24,000 is paid through PhonePe. Mother 54, 21,000, and it is paid through online. Next, preventive checkup of 5,000, that is also paid through online. ठीक है बेटा, example clear है क्या? Friends reply, come on. चलो guys, what is the deduction we are going to get in this particular case? Come on. Can we get deduction for 12,000? Reply please, come on. Can we get deduction for 8,000? Can we get deduction for 2,000? Total how much? 22,000. बोलो, preventive checkup कितना पे किया मैं? 4,000. But I can take only 3,000 because total cannot go more than 25,000. Yes, sir. Example क्यों दिया, समझ में आ रहा है क्या? Sir, if I don't give this example and I don't spend time now, and if I tell you one line answer, 80D बेटा याद है ना, मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 50,000 सेक्शन पढ़ा दिया ना हमें, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी, खत्म. एग्जाम में क्या करेंगे? So I can't take a chance. That's why I'm spending time. Is that clear now, everybody? Next, other side. Father 24,000, mother 21,000, total 45,000. Preventive checkup 5,000. Nonsense. Answer is 2,000. This question came in exam as it is because total put together cannot go more than 5,000. समझे क्या मैं क्यों पढ़ा आपको ये सब? कितने छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट आपको लगेगा अरे सर हमको पढ़ा है 25,000 50,000 एटीडी भी मेरे को मालूम. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर, फिर हमको पता चलता तेरे को क्या मालूम क्या नहीं मालूम. डेप्थ के कॉन्सेप्ट है ना यार. एंड इफ यू डोंट गेट द क्लैरिटी ऑन माइन्यूट पॉइंट, हाउ विल यू सॉल्व इट? जस्ट बाय सीइंग द बॉटम टॉप लेयर एंड यू कैन नॉट टेल, हेडलाइंस पढ़ के बस हो गया. भाई कैसा होगा यार, एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा यार. सीएनएस के साथ डील कर रहे हैं हम, बीकॉम के साथ थोड़ी डील कर रहे हैं कुछ. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बीकॉम, नहीं हो सकता है ऐसा. वी आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नो, नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? समझा? नेक्स्ट, लिसन, नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, लिसन, लेट मी क्लैरिफाई हियर. फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, मुझे पता है तेरा डाउट क्या है, तो रुक जा 2 मिनट. व्हेन आई एम नॉट रिप्लाइंग मींस you have to understand that I'm waiting for you to understand by yourself. For self, spouse, children, all three put together 25,000. Anyone senior 50,000. For parents, both put together, mother and father 25,000. Anyone senior 50,000. Parents need not be dependent. Preventive checkup maximum 5,000. It can be paid in cash also, and 5,000 is for both put together. 5,000 is for both put together, and 5,000 is within the overall limit of 25 and 50,000. So 5,000 is not over and above 25 and 50. This 5,000 is within 25 and 50, and 5,000 is for both put together. यहाँ पे 50 एक्चुअली क्रॉस नहीं करे, 50 एक्चुअली क्रॉस नहीं करे, पेरेंट्स पे 50 क्रॉस नहीं करे, बट फिर भी 5,000 नहीं मिलेगा बिकॉज दोनों को मिलके 5,000 है. इसके लिए मैंने ये डायग्राम में इधर एरो मार्क दिया था. इधर ये एरो मार्क जो मैं ड्रॉ किया, ये टाइम पास के लिए ड्रॉ नहीं किया भाई लोग एरो मार्क्स. देयर इज वन फंडामेंटल रीजन व्हाई आई हैव ड्रॉन दैट एरो मार्क्स, बिकॉज दोनों को मिलके
5,000 है। समझ में आया क्या? अब तो पूछ डाउट क्या है तेरा? ये एग्जाम्पल में डाउट क्या है तो पूछ। सपोज वो जो सेल्फ है वो आप हो तो उसमें 25,000 एग्जाम्पल में पूछना रहे क्या डाउट है? तो 25,000 और 47,000 दोनों ले सकते ऑब्वियसली every year I'm taking 75,000 डिडक्शन। मेरा 25, मेरे पेरेंट्स का 250। अरे क्या प्रॉब्लम है भाई? द डे व्हेन आई बिकम सीनियर आई विल टेक 1 लाख। फॉर मी 50, माय पेरेंट्स 50। अरे स्पीक आउट यार एवरीबडी। एंड इफ यू आर नॉट सीनियर, योर पेरेंट्स आल्सो नॉट सीनियर, यू कैन टेक 25 फॉर यू, 25 फॉर पेरेंट्स। पे करना पड़ेगा पहले इंश्योरेंस। पे नहीं करे तो डिडक्शन नहीं मिलता भाई, सबसे पहली बात। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एवरीबडी? एंड ऑल्सो लेट मी क्लैरिफाई वन इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर which is very practical and also it is in our syllabus also. That is, listen, senior citizens, I repeat, senior citizens who are unable to take medical insurance. I never told who did not take. Who are? Because logically medical insurance companies will hesitate a lot to give insurance for senior citizen. वो बोलते हैं भाई इसको इंश्योरेंस नहीं देंगे भाई। अगर इंश्योरेंस दिए इसको, ये 70-60 साल के ऊपर है, कब अचानक जाके बोलेगा इंश्योरेंस दे, इसको पॉलिसी नहीं देंगे। लॉट ऑफ टाइम्स मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू गिव पॉलिसी टू सीनियर सिटीजन। Then law is telling if a senior citizen is unable to take medical insurance, you take deduction for medical expenditure. Enjoy. Subject to maximum 50,000. इंश्योरेंस में कितना देते थे डिडक्शन? 50,000। इधर भी इतने देते। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? Speak out, my dear friends. And in case of self, it could be taken medical insurance or you contributing to one government scheme called CGHS. If anyone would have heard this, CGHS is called Central Government Health Scheme. That's monitored by the government. That is also like medical insurance only. You're getting what I'm saying, everybody? Small points, but very powerful points. Or exam आएंगे तो you'll be thankful to me. That's why I'm discussing all these points in detail. Yes, sir. Are we clear? Please, बोलो बेटा क्या डाउट है? My parents will not take again for that same amount. How will they take again for same amount? दो मेडिकल इंश्योरेंस क्यों निकालते बेटा? सर आपके पापा ने भी लिया और आपके ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर भी है। So my father will take deduction for insurance what is paying for his parents. मैं नहीं ले सकता because law told only service spouse children and parents. They never covered grandparents. अरे उनका खुद का मैं ले लेना डिडक्शन। अब तो बोलेगा सर 2 पॉलिसी ले रहे, एक पापा ले रहे, एक तुम ले रहे, ले लो भाई। तो कौन आके चेक करने वाला है कि पॉलिसी का कितना अमाउंट है, क्या है, वो सब तुम प्रैक्टिकल चीजें है। अब नोटिस आया मालूम पड़ता बचेगा वो बोलेगा ना सीधा तुम डिडक्शन लिया 20,000, पापा क्या है बोल के, वो भी बोल रहा है सेल्फ बोल के 20,000, दोनों का सेम अमाउंट दिख रहा है, बता प्रूफ्स क्या करेंगे फिर? ऐसे कुछ तो प्रूफ बनाएंगे क्या? कोई कुछ तो नॉनसेंस बिल थोड़ी है मेडिकल इंश्योरेंस का प्रूफ बना के देंगे, वो नहीं हो सकता ना। शिफ्टिंग मतलब बेटा मतलब सर ये एग्जांपल में इसका 47 ही हुआ ना, हाँ तो सेल्फ 2,000 बनाओ तो 3,000। सेल्फ ये जो 3,000 बाकी रह गया ये पेरेंट ले सकते। सर यहाँ पे 47 ही ले पाया। किधर 3,000 बाकी किधर रह गया? प्रिवेंटिव चेकअप दोनों मिलकर 5,000 के ऊपर जा नहीं सकता ना, तो 3,000 शिफ्ट भी गया तो होता जाता ना डिडक्शन, बढ़ेगा कैसा? तो पेरेंट कर लेगा वो, तुम्हारे खुद उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। सी वन पॉइंट लेट मी टेल यू वन पॉइंट। एवरी ईयर सिंस लास्ट 5 years, डोंट टॉक, एवरी ईयर सिंस लास्ट 5 years माय फादर्स लाइफ इंश्योरेंस आई एम ओनली पेइंग because he told to pay कर, so I'm paying life insurance of my father, okay, but he is only taking deduction. You might ask, अरे इनकम टैक्स वाले पूछे तो क्या करेंगे सर? इनकम टैक्स वाले पूछे तो क्या करेंगे? मैं बोलूंगा मेरे पापा को गिफ्ट दिया पैसा में, I gave gift to my father which is exempt and he is paying insurance. He told directly don't give me gift, you pay the insurance policy. If you want, take confirmation from my father. क्या होने वाला है उसमें?
अरे your own family, no boss, what difference it makes? But you cannot tell grandfather का करेंगे ऐसा कुछ. It's insensible. It should be logical. क्या बेटा? Same story. Limit का कोई फर्क नहीं है. 50 if it is senior, 25 if it is non-senior. Done. So are we clear with this point, everybody? समझ में आया सबको? 80D स्टोरी क्लियर है? Now I'll tell 80D is over. इतने दिन से 80D हुआ नहीं था. सिर्फ अपने को 25 और 50 पता था. सिर्फ फिनिश करे थे पहले अपन. अब भी कंप्लीट करें. तब आप पूछ सकते हैं सर पहले क्यों बोले फिर 25 और 50? अरे बहुत सारे क्वेश्चंस में आ रहा था ये पॉइंट. मेडिकल इंश्योरेंस. तो आई थॉट एटलीस्ट आई विल टेल द बेसिक लिमिट. डिटेल विल गो लेटर. समझे क्या? चैप्टर में इसलिए बताया बिकॉज उधर क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, मैं क्या करूं? बेसिक तो बताना आपको. उत्तर भी नहीं पता तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे? तभी तो मजा आया आपको. मैं नहीं बोलता था तो टाइम पे क्या लगता था आपको? अरे हर चीज बाद में हो रहा है. क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड विल टेल द डायलॉग. टैक्सेस difficult. And now I'm sure my students will not tell the dialogue at least. Please put side heading section 80D. Yes. First I will tell some point that you write. Please put side heading section 80D. ATD title मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. नहीं चलेगा रे. डजंट मैटर प्रैक्टिकली. बट एग्जाम में क्वेश्चन दिए तो चुपचाप फॉलो करो क्वेश्चन को. नहीं सर तो एक नॉन रेसिडेंट है जिसका कुछ इंडियन इनकम है लेकिन उसने पॉलिसी लिया यूएस. you can't take it. No. Because government is not getting any benefit in India, no. That's why. चलो 80D calculate बेटा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. राइट डाउन. इन केस ऑफ सेल्फ स्पाउस, in case of self, comma spouse and dependent children. In case of self, spouse and dependent children. Put a hyphen. Deduction is allowed. Deduction is allowed for payment of medical insurance premium. Deduction is allowed for payment of what beta? Medical insurance premium. Payment of medical insurance premium or any contribution. Payment of medical insurance premium or any contribution to central government health scheme or any contribution to central government health scheme or any other health scheme. Central government health scheme or any other health scheme notified by central government. Next point. In case of parents, put a hyphen. Deduction is allowed. Deduction is allowed for payment of medical insurance premium. Deduction is allowed for payment of medical insurance premium. Next point. 80D is applicable to HUF also. Next point. Premium
should be paid, premium should be paid out of his, premium should be paid out of his income chargeable to tax. Premium should be paid out of his income chargeable to tax. But practically difficult to prove. Because see, law is telling don't pay out of your exempt income, pay out of taxable income. अब एक बार बैंक में पैसा आया, क्या मालूम पड़ता है वो exempt income है, taxable income है. बट लॉजिकली कब अप्लाई हो सकता बोलो, अगर एक बंदे का इनकम सिर्फ exempt income ही है और वो मेडिकल इंश्योरेंस लिया, वो डिडक्शन नहीं ले सकता. See, the person has got only exempt income and is taking medical insurance policy, he can't take deduction. Obviously. That's why logically this cannot apply. Next. Exempt income बोले तो क्या है? बाप रे बाप. Agriculture income, share of profit from partnership firm, share of profit from, इसलिए बीच बीच में अपन पावर नैप लिए तो ऐसे होता. पावर नैप का भी पावर कम होना चाहिए. Next point. Next point, which is applicable to Shivateja practically, that is, I follow this last point. Premium can be paid for more than 1 year at a time. I generally pay for 3 years at a time. Whatever premium I pay, law told please divide by 3 and take in 3 years. बस खत्म. समझ में आया ना बेटा? इसके लिए भी एग्जाम्पल चाहिए क्या आपको? मेरा एग्जाम्पल क्या, आई पे ऑलमोस्ट अबाउट 16,000 every year, 1/6, and last year I immediately paid 45,000 for all 3 years, 1/6. बस मेडिकल इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी है. मेडिकल इंश्योरेंस है यार, ये 1 रुपए पे वापस नहीं आता, और उससे पहले भी 3 साल पे किया था, 1 रुपए पे रिफंड नहीं लिया मुझे. मैं थोड़ी भगवान को प्रे करूंगा, मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, उसको रिफंड, उसको रिटर्न आया जैसा देख लो. समझ गए ना आप मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, आई डोंट वांट दैट मनी. नहीं चाहिए भाई. टर्म पॉलिसी हो. इफ दैट मनी कम्स आई कैन नॉट एंजॉय दैट मनी. नो, राइट आउट. नहीं समझा? समझा ना रे? इफ प्रीमियम इज पेड इन लंप सम, नेक्स्ट पॉइंट, इफ प्रीमियम इज पेड इन लंप सम, if premium is paid in lump sum for more than 1 year, if premium is paid in lump sum for more than 1 year, then it is allowed proportionately. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट. समझा रवि भाई? सीनियर सिटीजन्स. So whenever I say senior, it means what senior? Resident senior. Senior citizens who are unable to take medical insurance, who are unable to take medical insurance can claim deduction for what beta? Medical expenses. Yes. Can claim deduction for medical expenses subject to maximum what beta? 50,000. So clear? Done. Take this. लिख लो ना सीधा डायग्राम. कुछ भी ले सकते, 50,000 लिमिट चलेगा. Come on, take this. Come on, guys, please take it.
आज तक ऐसा बढ़ता है इनकम टैक्स में किधर तो भी? डिपेंडेंट स्पाउस, इंडिपेंडेंट स्पाउस, सर चिल्ड्रन को लेके ना आप डिपेंडेंट पर स्पाउस डोंट राइट डिपेंडेंट स्पाउस, ओके? लास्ट टाइम स्पाउस इज ऑलवेज योर्स whether dependent or not, wholly or partly owned. अच्छा, सर्वेश जैसा मतलब वो चिल्ड्रन का भी फाइनेंशियल की सर स्पाउस ऑफ कोर्स का माइनर पे देते हैं doesn't matter, dependent, that's it. फाइनेंशियली डिपेंडेंट और क्या होना रही है? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? हाँ, अरे ऐसे किधर लिखा है 25 ईयर्स के तो डिपेंडेंट है, नॉन डिपेंडेंट है? ऐसे भी पागल लोग दिखते हैं जो 35 साल हो गए अभी तक पर कुछ काम नहीं कर रहे, पापा पर डिपेंडेंट है। अरे फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऐसे क्या है? एज का क्राइटेरिया है तो बोलता था ना आज तक में, अगर एज का क्राइटेरिया रहता था तो मैं बोलता ही था ना आपको। इंडिया में यार 50 साल का बंदा भी डिपेंडेंट रह सकता है उसके बापू पे, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा एज पे कैसे डिसाइड करेंगे रवि भाई? एज इज नेवर द क्राइटेरिया, नो। वो तो गवर्नमेंट स्कीम का गवर्नमेंट लिमिट से, वो इनकम टैक्स ऐसा कुछ नहीं बोला है, इनकम टैक्स कुछ नहीं बोलता ऐसा एज पर, नॉट एज पर इनकम टैक्स। लिमिट है यार अंडरस्टैंड है So are we clear this? Better take the example also. एग्जाम्पल के नीचे नोट लिखते, ले लेना बेटा। So please don't talk. कैटेगरी कैटेगरी अलग अलग करेंगे। सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन एक कैटेगरी, पेरेंट्स का अलग कैटेगरी है। मैं सीनियर का अलग, नॉन सीनियर का अलग लिखा क्या? नॉन सीनियर का लिख के मदर को इधर लेके आया क्या मैं? तो फिर कैटेगरी अलग करा ना मैंने। 50,000 पेरेंट्स का नहीं है वो लिमिट, सीनियर का लिमिट है। तो ऐसा भी हो सकता है सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन में कैटेगरी में भी कोई सीनियर है तो अपना भी 50 हो सकता है, पेरेंट्स का भी 50 हो सकता है, तो 1 लाख लिमिट आ सकता है। तो 1 लाख भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है। क्या एग्जांपल देते हैं हाँ, तो 80D का लिमिट नहीं है क्या पूछ रहे क्या? ये सब अभी तक जो पढ़ा है क्या है ये? हाँ, इससे लिमिट नहीं है क्या? अरे क्या, अरे एग्रीगेट लिमिट बताए ना बेटा, 25,000 50,000, उससे ज्यादा लिमिट क्या बताओ आपको मैं? अरे 50+50 तो 1 लाख ही है ना बेटा, क्या हो गया तुमको यार? अरे बंदा खुद सीनियर है, पेरेंट्स भी सीनियर है, तो मेरा लिमिट कितना है? 50, पेरेंट्स का लिमिट कितना है? तो 1 लाख तो आएगा ना यार। 50+50 1 लाख हो गया, ऐसा आईटीसी का नहीं है कि मतलब मैं समझ में नहीं पा रहा आपका थॉट क्या है।
बोल दिया ना 25-50 25-50, उससे ज्यादा लिमिट क्या है फिर? और यू एक्सपेक्ट दैट एक्ट विल ऑल्सो टेल 25-50 25-50 दोनों को मिलके 60, ऐसा थोड़ी बोलेंगे यार। वैसा भी कुछ है प्रोविजन, बट इसमें नहीं है एटीडी में, तो एक अलग सेक्शन में एटीसी सीसीसी सीसीडी बोलूंगा आज। चलिए आपके आपके एग्जांपल दे दिया केस स्टडी बोलते हैं सर, एक बार सब क्लासेस साइड होते हैं। Sat down, finish writing, write down notes. Preventive health checkup, preventive health checkup, preventive health checkup, preventive health checkup, maximum limit is 5,000. Preventive health checkup maximum limit is 5,000, and that 5,000 is within, and that 5,000 is within overall limit, and that 5,000 is within overall limits of 25 or 50, 25,000 or 50,000. Overall limits of 25,000 or 50,000. Friends, are we clear with this section, everybody? Guys, reply please. Next is no. You take if you want. Next. Sir, 80 QQB, 80 RRB. Already we discussed this, my dear friends. What is QQB? Royalty on books. RRB, royalty on patents. Bhai, abhi, one line let me tell you. Sorry to interrupt, but let me tell you. 3-4 friends here are some last 5 minutes they're telling sir break. Bhai, ek cheez samjho. We are at the far end of classes. Just only 1-2 days left for the classes. Now your focus should not be on entertainment, fun, chillana, time pass, break. ये सब नहीं है. पहले ये समझो कि क्या सीखने को मिल रहा है, क्या नहीं सीखने को मिल रहा है. First to understand that, then you find a reason for celebration, enjoyment and fun. I know when should I give break. ऐसा थोड़ी है कि मैं ब्रेक ही देता था आप लोगों को. अरे मैं जो पढ़ा रहा हूं कुछ बीच में वो तो सर ब्रेक, सर ये करेंगे क्या, अब ये बोलेगा बाद में सर टीडीएस का 2-3 सेक्शन बाकी है ना. अरे थोड़ा लाइफ में सीरियस बन जाओ बेटा, सीरियस बना थोड़ा और समझो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है यार. रियलाइज दैट. आपको ऑलरेडी पता है फिर भी ऐसा काम कर रहे. बोलने मत दो यार मेरे को, मतलब लिटरली आया भी हैदराबाद से हो तो बहुत डेंजर निकलते बाहर बोलो तो. मैं सच्ची बोल रहा हूं मैं, और सुने तो आप पागल हो जाएंगे फिर. So please beta, please understand when I tell something there is a reason for that. So please, chalo my dear friends, what is 80 QQB beta? Royalty on books. RRB, royalty on patents. इतना पता है. इसमें और क्या पता है अपने को? Deduction is royalty what we have actually got or 3 lakh, whichever is lower. इतना पता है ना अपने को. अब एक्स्ट्रा पॉइंट सुनो. 80 QQB is royalty on what beta? Books. But it covers books of any kind of nature, literary, artistic, any kind of books, comic books, any books, but it does not cover textbooks. BCom का, school का, to college का textbook मिलता है बेटा. On that royalty is coming, deduction will not come. Income is taxable, but deduction is not allowed. And one more point, listen. Royalty, total royalty is, let us say, 2 lakh. And this royalty of 2 lakh is actually coming from outside India. Possible, my dear friends? Law is telling the money should come to India within 6 months from the end of previous year. Last attempt, this question came in the exam, where they told royalty is 2 lakh. Where they told total royalty is 2 lakh. Out of 2 lakh,
How much came to India within 6 months was only 1.6 lakh. इनकम में 2 लाख जाएगा, इनकम में 2 लाख जाएगा, but deduction will be 1.6 lakh or 3 lakh, whichever is lower. You know the concept, but you don't have a clarity gone, no? Small points. Exam में आए ये point. तो समझ में आ रहा है बेटा? Next one more interesting point. 80 QQ एग्जैक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है, क्यों चांस लेने का यार? 80 QQB में बेटा रॉयल्टी is of two types, which is lump sum royalty, percentage royalty. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Percentage royalty. And law told percentage royalty maximum 15% is considered. In exam question has come. The last attempt, same question only I'm telling. They told royalty is 18%. Royalty is, which is 1,80,000. Student directly wrote deduction is 180 or 3 lakh, whichever is lower. Answer is wrong. 18%, 180 income में जाएगा, इनकम में पूरा जाएगा, बट डिडक्शन के लिए सिर्फ 15% कंसिडर करेंगे, विच इज 1,50,000 और 3 लाख, whichever is lower. समझ में आ रहा है बेटा? Everybody, sir, all of us, my dear friends, I hope you are getting clarity on this point. Everyone, sir, interesting concept, my dear friends. समझे क्या? And all the stories only 80 QQB. RRB में कुछ भी नहीं. RRB one line answer, royalty on patent, whatever royalty we get, or 3 lakh, whichever is lower. उधर percentage है, सब कुछ नहीं है. Yes, sir. All the stories on royalty on books, because it is very common that in books royalty is generally paid as a percentage. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Example चेतन भगत, he gets percentage of royalty. अमीश त्रिपाठी सुने कभी नाम? He gets royalty as a percentage on the books what he sold. Clear? Everyone? Proceed, let's write this. Please put side heading 80 QQB. RRB अलग से लिखते हैं side heading. 80 QQB टाइटल क्या है बेटा? नहीं. 80 QQB royalty on books. 80 QQB royalty on what बेटा? Books. नहीं, मैं बोलता ना, रॉयल्टी ऑन बुक्स. फर्स्ट पॉइंट, डिडक्शन इज मैक्सिमम 3 lakhs. डिडक्शन इज मैक्सिमम व्हाट बेटा? 3 lakhs. नेक्स्ट लाइन, रॉयल्टी कुड बी लमसम. Royalty could be lump sum or as a what beta? Percentage. Next point. If royalty is in percentage, then the maximum considered for deduction, for what beta? Deduction. इनकम में तो पूरा जाएगा, जितना आएगा उतना. Maximum considered for deduction is equal to 15% of value of the books. 15% of value of the books. Next point. Deduction is not allowed. Deduction is not allowed in case of royalty income. Royalty income from textbooks for school. Royalty income from textbook for schools, comma, magazines, comma, newspapers,
magazines, newspapers, and any other publications. And any other publications of similar nature. Any other publications of similar nature. Similar nature. Next point. If royalty is earned from, next point, if royalty is earned from, if royalty is earned from outside India, if royalty is earned from where, sir? Outside India, then the amount must be brought to India. Then the amount must be brought to India. Within 6 months from the end of previous year. We want foreign currency to come to India. Got the logic, no? We want that foreign currency to come to India. You're getting my point, everybody? All of us. That's it. That is which section? 80QQB. Please put side heading 80 RRB. नहीं जरूरत नहीं है. ATRRB title, royalty on patents. सर एक छोटी सी पॉइंट, मोर ऑफ ए प्रैक्टिकल इन नेचर. मैं केस देखा था उसके लिए बोल रहा हूं मैं ये. 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर लिखे ना सर, ब्रैकेट राइट. एक्सटेंशन में बी गिवन बाय आरबीआई. एक्सटेंशन may be given by RBI. Extension may be given by whom, sir? RBI. So clear? Done. Next. ATRRB, royalty on patents. One line. Deduction is royalty or 3 lakhs, whichever is lower. Royalty, whichever is lower, full stop. If it is earned from outside India, if it is, continue, if it is earned from outside India, if it is earned from outside India, then it must be brought to India. If it is earned from outside India, then it must be brought to India. It must be brought to India in convertible foreign exchange. It must be brought to India in convertible foreign exchange. In convertible foreign exchange within क्या बेटा 6 months from the end of previous year. Bracket, same point. Extension may be given by RBI. Extension may be given by RBI. Let's write one note. Extension may be given by RBI. ये नोट QQB RRB दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलके है, मैं नोट में ही लिखाऊंगा. डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन, जरूरत नहीं है भाई, मैं कैसे डिक्शन में लिखाने वाला हूं, सोच के लिखा था मैं. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB और 80 RRB. Deduction as 80 QQ or 80 RRB is allowed only to a resident individual.
is allowed only to a resident individual. I hope we got clarity on this point, everybody. Friends, come on, please reply. That's which sections are 80 QQB and 80 RRB. I hope now it's very clear for all of us. क्या 15%? नहीं, this is only in QQB. आपको लिखना है तो ये चार्ट लिख सकते चाहिए तो, बट QQB लिख के लिखो, है ना, बुक में चार्ट भी है, सब कुछ है. Sir, there is nothing which is missing in the material. Everything is there in the material, but the only reason why we are writing summaries in the classroom is only because when we write with our own handwriting, we get more amount of clarity. इसलिए मैं सब चीज लिखा रहा हूं आपको, और कुछ रीजन नहीं है. सर बाद में पढ़ने को भी मजा आता है सर. चाहिए सर. चलो guys, what is, चलो now tell me what are the sections we have completed totally in deductions. बोलो. 80D medical insurance premium, 80TTA, 80TTB, 80QQB, RRB, GG, GGA, GGB, GGC. नहीं हुआ वो. तो इधर तक सबको क्लियर है? Everybody clear, my dear friends, all of us? Guys, please reply. चलो, let's complete 1-2 points, then we'll take a break immediately. Just give me 1 minute. हो जाएगा 1 minute में. So there's something called 80DD and 80U. DD, easy to remember, so shortcut I'm giving. DD is dependent disability. 80U is self disability. डिपेंडेंट डिसेबिलिटी मतलब Somebody is dependent on us. When I say somebody, somebody who will also I'll tell. Don't worry. ठीक है? Spouse, parents, brothers, sisters only. ठीक है? अगर ये पॉइंट नहीं है तो आदमी कोई डिसेबल्ड बंदे को पकड़ के अपने पास लेके आएगा डिडक्शन के लिए. पता है मुझे. सर क्लियर ना? डिपेंडेंट डिसेबिलिटी. यू इज व्हाट? सेल्फ डिसेबिलिटी. खुद डिसेबल्ड है भाई. समझ में आ रहा है क्या? डिडक्शन इज स्ट्रेट फ्लैट 75,000. Deduction is straight flat 75,000. No limit only. Even though you spend 10,000, still deduction is 75,000. But for the sake of deduction, you will not expect somebody to become disabled, no? And if it is severe disability means disability is more than 80%, which doctor will certify? Which doctor will certify based on paralysis or what kind of he is going through disability? If he certifies that it is severe disability, that is more than 80%, then deduction is straight away 1,25,000. 80U same 75,000, 1,25,000. कुछ फर्क नहीं है. उधर भी more than 80%. Same. But DD में U में फर्क क्या है? We are spending on somebody who is dependent on us and that person is disabled. अपन खुद disabled है तो DD नहीं आएगा, U आएगा. लिमिट्स पूरा सेम है. समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी चलो एक लाइन लिख के फिर ब्रेक लेते हैं. हेडिंग 80DD एंड 80U दोनों साथ में लिखते हैं. मॉड्यूल 2 देना एक बार. 80DD एंड 80U. क्लास में करेंगे. 80DD एंड 80U. सिर्फ डिसेबिलिटी लिखो और नीचे पॉइंट में लिखें. सेक्शन 80DD इज एप्लीकेबल Section 80DD is applicable in case of medical treatment of dependent. In case of medical treatment of dependent with a disability. In case of medical treatment of dependent with what better? Disability. Next line. Dependent covers spouse, children, parents, brothers and sisters.
Clear now? And let me tell you, disability word is defined in the law, just for your understanding. Low vision, blindness, leprosy, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation, mental illness, autism, cerebral palsy, multiple disability, all the list is there. Do you have to remember all this? What do you have to remember only? Disability. That's it. Next section. Next point. ATU. ATU is applicable. ATU is applicable in case of self-disability. Next point. In both the sections, deduction is flat. In both the sections, deduction is flat, 75,000. Full stop. In case of severe disability, deduction is flat, deduction is flat, 1,25,000. Next line. Severe disability means disability more than 80%. Severe disability means disability is more than 80%. Next point, last point. In both sections, deduction is allowed only if certificate is obtained from the medical authority. So clear? That's it. We'll take a break. After break, we'll talk more. Thank you. Sure, done. Get back, guys. Done. Back. So, friends, tell me what are the sections we have done in deductions, guys? 80D, 80DD, 80GG, GGA, GGB, GGC, QQB, RRB, TTA, TTB. 80U. Are you clear with the sections, everybody? Chalo, guys, what is 80D for? Medical insurance premium. 80DD, dependent disability. 80U, self disability. Even though you spend 1 rupee, still deduction is flat, 75,000. Severe disability, 1,25,000. GG, rent paid. GGA, scientific research or rural development. GGB, company to political party. It could be advertisement or it could be contribution. GGC, other than company to political party, only contributions. QQB, royalty on books. RRB, royalty on patents. TTA, interest on savings bank account. TTB, interest on savings bank and fixed deposit, only for senior citizen. And senior citizen means, if non-resident, please come to 80 TTA. So are we clear with this? Done, guys. Thank you. Next section, guys. Listen carefully now. So friends, come on, please listen, everybody. Please concentrate. Let's look at the next interesting section. Sir, there is something called 80DDB. 80DDB. Medical treatment for specified diseases. And I already told you, we do not remember the list. Clear, friends?
And what they told in the law is, whatever actual expense you incur, or 40,000, whichever is lower, please take it as deduction. And if you are a senior citizen, whatever actual expense you incurred, or 1 lakh, whichever is lower, take it as deduction. That's it. कुछ नहीं इसमें. What is 80 DDB? Medical treatment of what diseases? Specified diseases. 80 DD क्या था बेटा? वो तो dependent disability था. ये तो specified diseases का है. फर्क समझ में आ रहा है बेटा? What is 80 DD? Dependent disability. What is 80 DDB for? Medical treatment of what? Specified diseases. कितना है deduction? Whatever actual expense we spent, or 40,000, whichever is lower. Senior citizen, actual expense what we spent, or 1 lakh, whichever is lower. Getting clarity everybody? Friends, let's finish writing this. अच्छा, उससे पहले एक और भी पढ़ लेते फिर लिखते अपन. Sir, 80E, very popular section, very popular and very important. Came in exams so many times. Interest on loan taken for higher education. Higher education means after 12th. Interest on loan taken for what, sir? Higher education. So, for example, if your parent has taken a loan to pay your fees, what they have to end up paying interest also, no, sir? Whatever interest they are paying, law is telling, will give deduction under 80E without any limit. जितना interest है उतना deduction मिलेगा. But subject to one point, that is, deduction will come only for a period of 8 years. Current year plus 7 years. मतलब 8 साल तक डिडक्शन मिलेगा. प्रैक्टिकली चलेगा बोथ, बिकॉज बैंक्स गिव एजुकेशन लोन्स ओनली फॉर 5 years और 7 years. तो उससे ज्यादा चलता ही नहीं ना लोन. अगर बैंक लोन दिए 10 साल का, 8 साल तक डिडक्शन मिलेगा और इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है. जितना इंटरेस्ट है उतना डिडक्शन मिलेगा. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? And education need not be in India, it could be in outside India also. Because in BTech engineering background, it is so common that they finish off BTech, immediately go to foreign, study for 1-2 years there, do job for 1-2 years. If like somebody marry there only, settle there only. If you want to come back to India, then come back to India. This is a standard system protocol what people follow, especially in that engineering background. उनका लाइफस्टाइल चलता ही वैसा है. बीटेक खत्म करो, उसके बाद फॉरेन जाओ, एमएस करो, या तो कोई और कंट्री चले जाओ, कुछ तो टोफेल लिखो, जीआरए लिखो, मैट लिखो, चलो फॉरेन. 2 साल कुछ पढ़ाई करो, 2 साल जॉब करो, पैसे कमाना चालू करो. इंडिया को वापस आने का मन है तो आएगा, नहीं तो उधर ही बैठेगा. Majority engineering students lifestyle goes like this. So clear with this section everybody? बोलो महेश क्या डाउट है? चलेगा, मिलेगा. बट खुद एजुकेशन लोन तेरे को देते नहीं देते. Father has to sign as a guarantor. Obviously, one and the same हो गया. It's as good as father has taken loan for education. Exactly, it's one and the same. Done. So are we getting clarity on this point, everybody? Friends, very interesting section, guys. Came in exam so many times. बहुत मस्त section है. Clear है? Please put side heading 80 DDB. 80 DDB. Title: Medical treatment of specified diseases. DDB. 80 DDB, medical treatment of what beta? Specified diseases. First point. This section is applicable to individual and HUF. This section is applicable to individual and what beta? HUF. Number 2, medical treatment could be for self or for a dependent. Medical treatment could be for self
or for dependents. Medical treatment could be for self or for dependent. Next line. Deduction is actual expense incurred. Deduction is actual expense incurred, or what beta? 40,000. Whichever is lower. Actual expense of 40,000, whichever is lower. Next slide. In case of senior citizen, deduction is actual expense or 1 lakh, whichever is lower. Actual expense or 1 lakh, whichever is lower. So clear? That's it. Next, please put side heading 80E. Very important. Put a star mark. Interest on loan taken for higher education. Interest on loan taken for what beta? Higher education. First point. Deduction is allowed only for interest without any limit. Sir, next point. Higher education could be for himself. Higher education could be for himself or spouse. Himself or spouse or children. Himself, spouse or children, or any student for whom himself, spouse or children, or any student for whom he is legal guardian. Legal guardian. Loan, no. It should be taken only from financial institution. Next point. Loan should be taken from any financial institution. Good, valid point. Loan should be taken from any financial institution or any approved charitable institution. Loan should be taken from any financial institution or any approved charitable institution. समझ गए ना बेटा? Everybody? Higher education means after 12th लिखे क्या अपन? ठीक है, last point. Higher education means after 12th. Next point. Deduction is allowed
Deduction is allowed for maximum. Deduction is allowed for maximum 8 years. लिमिट कुछ नहीं है दोस्त, इंटरेस्ट का लिमिट कुछ नहीं है, जितना है उतना मिलेगा. इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, बट जनरली इट्स अराउंड 8 to 9% बीच में होता है. डन. आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? विच सेक्शन ऑल दिस? 80E. चलो बेटा, व्हाट इज 80D? मेडिकल इंश्योरेंस. 80DD, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी. DDB, specified diseases. 80E, interest on loan taken for higher education. दोस्तों, friends, 80GG, rent paid. GGA, scientific research, rural development. GGB, company to political party. GGC, QQB, royalty on books. RRB, royalty on patents. TDA, interest on savings bank account. TDB, interest on savings bank and any deposits for resident senior citizen. 80U, self disability. दोस्तों क्लियर है? Next section guys, something interesting. Listen very clearly and carefully understand this. Other person is dependent on him, who is also a disabled person. And can we claim for 80U and 80DD? Example, I am spending money for someone and they are disabled. I am also disabled. Both will come. But when I am spending for someone who is disabled and I am taking 80DD, for same amount again he can't take 80U. अरे दोनों सेक्शन अलग अलग है ना भाई. अरे अपन खुद डिसेबल्ड है और वो भी डिसेबल्ड है, दोनों कंबाइंड डिसेबल्ड है क्या? किसका? अरे अपन किसी और के लिए स्पेंड करे जो डिसेबल्ड है, अपन 80DD ले लिए, वो अमाउंट का वापस 80U भी लेता क्या वो बंदा? एक ही अमाउंट का दो डिडक्शन कैसा मिलता? बस वही तो बोल रहा हूं. ऐसे कैसे होता वही बोल रहा हूं. ऐसे कैसे होता वही बोल रहा हूं मैं. डन guys, are we clear with this point everybody? Next, listen to these sections guys. Something interesting, please listen guys. Everybody listen over here. Sir, listen carefully. थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा. फ्रेंड्स, 24B ये सेक्शन याद है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. इसका लिमिट्स कुछ है क्या? क्या? लेट आउट नो लिमिट. सेल्फ ऑक्युपेड मैक्सिमम 2 lakhs when 3 conditions are satisfied. If not, maximum 30,000. Loan is taken on or after 1/4/1999 for acquisition or construction. It is completed within from the end of financial in which loan is taken. Now one reason why I asked that question. Listen very clearly. Sir, they brought one section called 80EE. 80EE, where the loan is sanctioned during 16-17. Loan is sanctioned during 16-17 and the loan is taken from a bank or it is taken from a housing finance company. Loan is taken from a bank or housing finance company and loan does not exceed 35 lakhs and property stamp duty value does not exceed 45 lakhs. Sorry, 80EE, no, 50 lakhs. Come on, loan does not exceed 35 lakhs and the property stamp duty does not exceed 50 lakhs. Correct, my dear friends? Law told we will give you some extra deduction. We will give you some extra deduction under section 80EE and the extra deduction will be 50,000. Or interest, whichever is lower. 50,000 or what beta? Interest, whichever is lower. So basically you have to understand one interesting point here. Imagine one person has taken loan during 16-17. He has taken loan during which date? 16-17. 16-17. Listen carefully please. And loan does not exceed 35 lakh. Let's say 30 lakh loan he has taken. How much loan he has taken? 30 lakhs. I repeat my dear friends, सुन लो बेटा ध्यान से. 30 लाख का लोन लिया
assume interest rate is, let us say, 9% per annum. On 30 lakh, 9% interest will come to 2,70,000. बराबर है बेटा? अगर वो let out property है, entire 270 you can take in 24B only. But if it is self-occupied, how much you can take in 24B? If it is self-occupied, how much you can take in 24B? 2 lakhs. बाकी बचा कितना? 70. Out of 70, take 50 here. इसका पर्पस समझ में आ रहा है क्या आपको? वापस रिपीट करूंगा एग्जाम्पल बेटा, ध्यान से सुन लो बेटा. I repeat once again, everybody, please listen. A person has taken a loan during 16-17, and let us say he has taken loan of 30 lakhs. He purchased property for 40 lakh, and on 30 lakh, interest rate is 9%. 30 lakh 9% कितना होता बेटा? 2,70,000. Assume for a second property is let out. जितना भी 2,70,000 पूरा 24B में डिडक्शन ले लेंगे बेटा. अगर अज्यूम करो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो क्या होगा? 270 में सिर्फ 2 लाख ही मिलेगा 24B में. अरे यार बोलो ना यार, इतना स्लोली बोल रहा ना यार. 2 लाख ही मिलेगा, बचा कितना? सिर्फ 70. Out of that 70, you take 50,000 under this section, provided all these conditions are satisfied. What is condition number 1? Loan is sanctioned during 16-17. Its loan is taken from a bank or finance company. Loan does not exceed 35 lakhs. Property does not exceed 50 lakhs. And one more important condition. That property should be your first home. इसलिए बेनिफिट दे रहे. जिंदगी आदमी के पास पैसा नहीं है, पहली बार जिंदगी में कुछ पैसा खर्च करके पहली बार घर खरीद रहा है जिसमें वो रहने वाला है, उसको 2 लाख की डिडक्शन मिल रहा है. एक्ट बोर्ड 2 लाख ऊपर एक्स्ट्रा जितना भी है 50,000 तक लोन ले ले. Exactly. Loan should be taken only during 16-17. Listen. Let me complete. This section will apply only if loan is taken during 16-17. Then once 16-17 was over, people started shouting, telling ये concept तो अच्छा है, कितना conditions है, but बहुत लोगों को फायदा तो होता ना इसका. अरे इनकम टैक्स इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू गिव बेनिफिट टू बिग पीपल. अरे कल प्रोविडेंट फंड का पढ़े हम, आज भी पढ़े 7.5 लाख के ऊपर. कल पीएफ में क्या था? 2.5 लाख ऊपर जितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो एक्सेस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स करेंगे. और 2.5 लाख ऊपर कंट्रीब्यूशन किसका होता है यार? जिसका इनकम ज्यादा है उसका ही होता ना यार. नॉर्मल लोगों का तो हो ही नहीं सकता उसका. सो गवर्नमेंट इज ऑलवेज फोकस्ड टू टैक्स हाई इनकम पीपल. That is the reason by day 1 of Income Tax Act on February 13th, I told you one point. Income tax is progressive in nature. Higher the income, higher the tax. Lower the income, lower the tax. Day 1 of this class, I told that only. सब मेरे पास देख रहे थे, क्या बोल रहे हैं ये बंदा? आप समझ में आया क्या? देखो, listen. 1670 when this concept was brought, lot of people thought, wow, कितना अच्छा concept है ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार है ये. Then government thought, we'll again bring these benefits. And they brought one more section called 80EEA. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुन लो. No fun please. Listen, don't give reactions. Loan would have been sanctioned between 19 to 22. Sir, one point you have to understand, don't give reaction. ये सब reaction मत दो. सबसे पहले ये समझो, ये सब प्रैक्टिकली बहुत बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट्स है. अब ये बिल्कुल डायलॉग मत हो, सर ये सब पॉइंट्स ना हम लोग पास होने के बाद लेके आना चाहिए. तो तू क्या लिख के पास होता? और जो तू पढ़ के लिखा एग्जाम बाहर बिल्कुल ही अलग है, तू क्या करेगा पास होके? क्वालिफिकेशन विदाउट नॉलेज यूजलेस. नॉलेज विदाउट क्वालिफिकेशन लिटिल बेटर. नॉलेज विदाउट क्वालिफिकेशन, बोथ आर देयर, देन ओनली इट मेक सेंस. मैं आपको बताता हूं ऑलरेडी, कंपल्सरी 1956 नहीं आता अभी तक 2013 ठीक से. Boss, it's important. So don't give reactions. देखो, loan is taken during what? 19 to 22. That means what? 1/4/19 to 31st March 22. And loan is taken from any bank or housing finance company. And loan का लिमिट कुछ नहीं बताया उसने. But property value 45 lakhs के नीचे होना चाहिए. समझे क्या? And deduction what they told is 1,50,000 or interest, whichever is lower. मेरा एक क्लाइंट है जो 40 लाख का लोन लेके प्रॉपर्टी परचेस किया. इंटरेस्ट रेट 40 लाख पे 9% है. 9% is 3,60,000 and it is self-occupied property. 2 lakh we are taking under 24B
and 1,60,000 balance left out. Out of that, 1,50,000 I'm taking under 80 EEA. Is it not a great benefit? सिर्फ 10,000 बच रहा है. एंड ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट कंडीशन फर्स्ट होम. और उस बंदे का मैं जो पे कर रहा ना 40 लाख पे 9%, उसके साथ साथ वो प्रिंसिपल भी रिपे कर रहा है. जो प्रिंसिपल रिपे कर रहा है उसको मैं लेके जा रहा हूं एटीसी में. कितना बेनिफिट है यार वो. उस बंदे के पास ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, बच्चों का स्कूल फीस, लाइफ इंश्योरेंस सब है ही नहीं. एटीसी पूरा उसमें कवर हो रहा है पूरा. नहीं वो एज्ड बंदा है वो, तो बच्चों का स्कूल फीस कहां से आएगा. लाइफ इंश्योरेंस तो खत्म हो गया था उसका. सर समझ में आ रहा है किसी. बट यू माइट आस्क सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी, 22 तो हो गया ना, अपना 22 23 है ना, तो क्या फिर भी एग्जाम क्वेश्चन पूछते. क्योंकि जो पहले लोन लिए उनको तो अभी भी फायदा चल रहा है ना सर. Who have taken loan during that period, they are still enjoying this benefits. अभी जो लोन लिए थे उसको बेनिफिट कुछ नहीं है. जो तब लिए थे उसको फल मजे चल रहा है. अरे एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड 16-17 they brought this. Then people started telling we want some more benefit like this. Government thought 2 years to bring again. और अभी तक कुछ लेके नहीं आया वापस नया चीज. बट गवर्नमेंट ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए. They brought one section called 80 EEB. But this section they brought with a different intention. Loan is taken between 1/4/19 to 31st March 23. सुनो. Loan is taken from any bank or loan is taken from any financial institution. रीजन है बोलता हूं, लोन का लिमिट नहीं है एंड प्रॉपर्टी का कोई लिमिट नहीं है. And special point is that this is not for any property. This is only when you buy electric vehicle. And government is telling we'll give deduction of 1,50,000 or interest, whichever is lower. So if somebody is buying electric vehicle, if someone is buying electric vehicle, if they would have purchased before 31st March, they would have got this great benefit. If they're buying in April, they'll not get any benefit of this deduction. मार्च से पहले लेते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बेनिफिट मिलता था मस्त. लोन लेते तो लोन पे इंटरेस्ट बढ़ते तो क्या करते. अच्छा आप लेते थे क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल. कौन. ठीक है. Sir, I hope you are getting clarity on this point, everybody. Sir, speak out. You have to understand one point very clearly, that the story will come only in case of electric vehicle. Last point. And they close the story in 31st March 23. अरे वो लोन लेंगे तो ना, वो लोन लेने वाला आदमी थोड़ी है. हाँ, straight. Sir, I hope this table is clear. No one's, all of us. Sir, please reply. यार प्लीज बात करो बेटा. Sir, stop it now. There is one interesting question in ICI material which I saw. Let me discuss that question, guys. अरे आप लोग बात करेंगे तो मैं प्लीज. Sir, if you are interested in talking, then I'll not discuss all this. So please see that. See the first point. Mr. A has taken a loan. Please see carefully, sir. Let's see one after the other. ABCD अलग अलग से देखते. ठीक है, बाद में टेबल क्लास में लिखते. A has taken loan how much? 43 lakhs. He has taken from HFC, means Housing Finance Company. Housing Finance Company. And what is the date of sanction of loan? 1/4/21. Date of disbursement? 1/5/21. Let me tell you, disbursement is not important for us. Sanction is important. Sanctioned when? 1/4/21. Let's see. What is the purpose of loan? Acquisition of the property. Correct? No? What is the loan amount? What is the property value? 45 lakhs. What is the rate of interest? 9%. Now tell me, when it is
loan is taken on 1/4/21. You please tell me, guys, will 80 double E come or a double A will come? Double A, because double E is only 16-17. डबल ए का कंडीशन क्या था? लोन का लिमिट नहीं था, बट प्रॉपर्टी शुड नॉट बी मोर देन 45 lakhs. इस केस में प्रॉपर्टी कितना है? 45 lakhs. चलेगा ना बेटा? मल्टीप्लाई करो इंटू 9%, कितना आ रहा है? 3 lakhs. 45 lakh इंटू 9% कितना है बेटा? 4,05,000. बराबर है बेटा? आउट ऑफ दैट 4,05,000 व्हाट यू कैन हैप्पीली डू. अच्छा, एक्चुअली 4,05,000 नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, बिकॉज ये डिस्बर्समेंट 1/5 को हुआ है. डिडक्शन he asked for which year? अच्छा, A by 23-24 he asked. लोन कितना लिया ये? अच्छा, लोन 43 लिया क्या? ठीक है. 43 लाख इंटू 9% करो. 3 lakhs. Out of the 3,87,000, 2 lakh will take under 24B. Out of that 3,87,000, 2 lakh will take under 24B. बचा कितना बैलेंस? 187. Out of 187, 150 will take under 80EEA. 2 lakh we have taken under 24B and 1,50,000 have taken under 80EEA. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? Everybody clear with this, my dear friends? If this property would have been let out, there is no use of 80EEA. Then next point. B का केस देखो. 45 lakhs and he has taken loan from NBFC. My straight answer, next point, sanction 1/4/2020, disbursement 1/5/2020 and acquisition of property. My answer is no deduction will come under 80EE or EE. Because EE will come only when you take a loan from a bank or housing finance company. But he has taken from where? NBFC. देख लो. Answer is nil. Straight away answer is nil. But 24B will come. ना उधर क्या प्रॉब्लम है? 2 लाख तो आ जाएगा 24B में, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं इसलिए बोला ना 80EE और EE will not come. It's clear? Next point. Third case देखो. 20 lakh he has taken from NBFC on 1/4/20. पूरा नो मत बोलो यार, पूरा पढ़ लो किसके लिए. And he has taken on 1/4/2020 sanctioned. Disbursement 1/5/20. But disbursement important है अपने को. क्या important है? Sanction. So when is it sanctioned? 1 second. 1/4/2020. Purchase of what vehicle? Electric vehicle. Cost of vehicle का कुछ संबंध है क्या? कितना भी हो सकता है. कितना है vehicle? 22 lakhs. ये लोन कितना लिया? 20 लाख. 20 लाख इंटू 10%. 2 लाख. डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख रे. 80EEB is 1,50,000. 80EEB 1,50,000. And in last case I clearly wrote bank or any financial institution. अरे चार्ट बनाया यार मस्त. क्लियर है ना? नेक्स्ट. सर एग्जाम बहुत अच्छा लगा, मैं देखते हैं प्लीज. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग द एग्जांपल. क्लियर है ना? लास्ट केस देखो बेटा. ये आपका आईसीआई मटेरियल ही है. मिस्टर रेड्डी आईसीआई मटेरियल में कभी कभी थोड़े एग्जांपल्स बहुत अच्छे रहते. हाँ. सी नाउ. Amount of loan taken 15 lakhs. Loan is taken from where? Public sector bank. Date of sanction of loan 30th March 2019. Disbursement of loan 1/5/2019. And purchase of electric vehicle for personal use. Which date important? Sanction or disbursement? Sanction. Disbursement is irrelevant. Sanction कब हुआ इस केस में? 30th March 19. Deduction will not come under 80EEB. नहीं मत बोलो यार, electric vehicle का एक सेक्शन है EEB. Because EEB deduction will come only if loan is taken between 1/4/19 to 31st March 23. It was sanctioned before 1/4/19. अरे यार, sometimes decisions are taken not just for the sake of deduction, man. Sir, I hope this concept is clear for all of us. Pakka, my dear friends.
Sure? Take this. Take this 80 double E, double EA, double EB. टाइटल नहीं दे सकते इसको. देखो डबल ई है तो हाउस प्रॉपर्टी का है, बी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है. And even today, government is giving very good subsidy for electric vehicles. Huge subsidy they give for electric vehicle, boss. लाख रुपए के ऊपर आ रहे हैं. Some companies take the benefit themselves, some pass it on. Yeah. Tata passes on. Sir, highlight that word sanction, no? Because disbursement is not important for us. What is important? Sanction. क्या बेटा? बोलो. Sir, I hope you are done, everybody. Friends, are we done? Come on, guys. 80 double E is applicable when? When loan is sanctioned during 16-17. Loan does not exceed 35 lakhs. Property does not exceed 50 lakhs. Deduction कितना maximum? 50,000. Double E A loan sanction between 19 to 22 और उधर 1.5 लाख का डिडक्शन है. क्लियर है? डबल ई बी इज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड डबल ई बी एनबीएफसी भी चलेगा, बट फर्स्ट टू केसेस में इट इज ओनली बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. कुछ भी हो सकता है.
अरे तभी स्टार्ट करे. गवर्नमेंट वांटेड टू एनकरेज पीपल टू बाई. And basically you have to understand one point that this benefit is only very restrictive in nature. अगर कोई बंदा पहला घर भी ले रहा है, करोड़ रुपए का ले रहा है, मिलता है क्या डिडक्शन उसको? नहीं. So many conditions are there in this. Clear no? जा. No. Before COVID only they brought. ऐसे ही लेके आए थे. 2019 में लेके आए अमेंडमेंट. COVID तो 20 में आया ना. 2019 में लेके आए. Government brings all this only to give some benefits to the people. Come on, guys. No, it's no way connected with COVID. Guys, stop it. I have a question, guys. Sir, Shivateja has got a life insurance. ठीक है बेटा? Every year I'm paying premium. Now let us say after 20 years I've withdrawn the money. मतलब policy got matured. Policy got what better? Matured. Because we know that life insurance money will come at the time of maturity or death, whichever is earlier. Now assume for a second on maturity only money has come. Now my question to you is, on maturity when money has come, is it taxable or exempt? क्या लगता है आपको? हर साल जब इंश्योरेंस पे कर रहे, ले लेना मस्त ATC का डिडक्शन, मैच्योरिटी में जब पैसे आ रहे हैं, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? मैंने कभी नहीं बताया आज तक. I told we'll talk. It is subject to conditions. I told you it is subject to conditions. Now answer is, it is taxable or exempt depends upon some very, very interesting condition. Now what is that? Listen, the last discussion for today. Let's complete. Come on. I'm talking about what beta? Life insurance. Listen very clearly, sir. क्या हुआ? Life insurance deduction will come when premium is paid for self, spouse and children. And they never told in the law dependent children. And they never told in the law parents. That means if life insurance is paid for parents, deduction will not come. Taxable mat board, deduction nahi aayega. And let me tell you honestly, practically my father life insurance I am only paying. But I am not taking deduction. My father is taking. वो अपना एडजस्टमेंट है. गिफ्ट बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है? कौन आके पूछेगा? आई विल गिव मच गिफ्ट आई वांट टू माय फादर. हु विल स्टॉप मी? हु आर यू टू स्टॉप? रेडी? कौन बोला आई विल स्टॉप? Get back, guys. Come on. Life insurance deduction will come when premium is paid for what? Self, spouse, children. Is parents covered? No. Sir, listen. Sir, listen, please listen. भाई तेरा फोन ना मैं policy taken before 1/4/2012. Second case, policy taken on or after 1/4/2012. Last case, policy taken on or after 1/4/13, that too in case of disabled. So lucky people like us, we have only two categories: before 1/4/2012, on or after 1/4/2012. Clear, my dear friends? Listen very clearly. Deduction, they told, maximum 20% of sum assured. I repeat again, what is the line I wrote, sir? Deduction how much? Maximum 20% of sum assured. Whenever I say sum assured, my dear friends, sum assured always means policy value excluding bonus. I hope you know that insurance policies, we get the bonus also. Next, if policy is taken on or after 1/4/2012, deduction is maximum 10% of sum assured. On or after 1/4/13 for disabled, deduction is maximum, somebody is telling 5%. Common sense नहीं है उसको. Maximum 15% of sum assured. 5% कैसा बोलते रहे? ठीक है, ऐसे ही काम करो. अच्छा है.
15% of what, my dear friends? Sum assured. Now let me explain the point clearly by one small example so that full clarity will come. Listen beta. Carefully listen. Sir, Shivateja, I have taken one policy. Okay? And the policy value is 30 lakh. How much policy value is, my dear friends? 30 lakhs. Premium, what I'm paying every year is 50,000. Clear, my dear friends? Speak out. Yes, sir. Please reply, my dear friends. Or let us say premium what I am paying is, let us say 75,000. Yeah, actual example. Actual me seen. Clear? Eh? So on 20 years policy, it is 15 lakhs approximately I pay and I get 30 lakhs. समझ में आ रहा है बेटा? चलो get back now. Now tell me, deduction, what will come under section 80C, sir? Straight away deduction, what I'll get is 75,000. Maturity, straight away amount is exempt. Under section 1010D, since premium payable does not exceed 10% of sum assured. Does not exceed what, beta? 10% of sum assured. Example 2. Mr. X. ठीक है बेटा? समझ में आ गया तो already अच्छी बात है. Clear, my dear friends? And imagine this policy is taken on 1/6/2018. अगर 1/6/2011 है तो क्या करता था? 1/6/11 है तो I would have taken 20% of sum assured. अरे पहले लिमिट ज्यादा था यार, अभी कम कर दिया लिमिट. चलो नेक्स्ट. पॉलिसी वैल्यू लेट अस से 50 लाख. कितना बेटा? 50 lakhs. And policy is taken on 1/6/2020. 1/6/2020. And the premium per annum payable is equal to 8 lakhs. मतलब शायद 4-5 साल का पॉलिसी होगा. अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? Now tell me, what is the deduction under section 80C? Maximum 10% of sum assured. बराबर है ना बेटा? Speak out. Which is nothing but 5 lakhs. This 5 lakhs is again restricted to 1,50,000. On maturity, what will happen, beta? Straight away taxable. I think you got the answer. Taxable क्यों है? Because premium payable is more than 10% of sum assured. एक लास्ट एग्जाम्पल दूं, बराबर आंसर देंगे. लास्ट एग्जाम्पल, विद दिस विल क्लोज. Example 3. Mr. A. He has taken a policy on 1/6/2011. Policy value, let us say 5 lakh. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं, छोटू सा एग्जाम्पल दे रहा हूं. ठीक है? प्रीमियम पेएबल इज लेट अस से 1,20,000. 1,20,000. समझ में आ रहा है बेटा? प्रीमियम पेएबल कितना है? 1,20,000. अभी मुझे बताओ बेटा, what is the deduction that I'll get under section 80C? This 1,20,000 which is restricted to maximum 20% of sum assured, which is nothing but 1 lakh. इसको वापस 1.5 लाख बोलना है क्या? Wonderful. On maturity, answer is taxable. The reason being very clearly, premium payable taxable, since premium payable is greater than 20% of sum assured. 20% are taken because it is before and for 2012. After and for 2012 तो कितना लेते? 10% लेते. On or after 13 है और disabled है 15%. Yes, sir. I think we are getting complete clarity on this, my dear friends. Everyone, in your notes, please put side heading section 80C.
ATC. I'll tell one point, then you can proceed. ATC provides deduction ATC provides deduction for various investments and expenditure. For various investments and expenditure. अब वेरियस क्या क्या है थोड़ा तो ऑलरेडी आपने पता है. ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये सब याद है ना बेटा. सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये सब हम लिखेंगे पर कल लिखेंगे, आज नहीं. वेरियस इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर. ठीक है ना बेटा. फ्रेंड्स, इन दैट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट विल बी कंप्लीट टुडे. बैलेंस पॉइंट्स कल लिख लेते. फर्स्ट पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस. हाँ, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बिगेस्ट पॉइंट है. बाकी सब कुछ भी नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन. आई थिंक नाउ वी गॉट अ क्लैरिटी. नो मैच्योरिटी अमाउंट का क्या होगा भरत? तेरा डाउट का आंसर आ गया ना? टेक इट. Yes, beta. Sometimes, what happens, not sometimes, almost every time, if your policy value is 30 lakh, apart from 30 lakh, they also give extra 3 lakh, extra 5 lakh as bonus. Life insurance companies give that. Starting only they will tell. It's a extra benefit. सर ये टेबल लिखिए आप लोग. नीचे एग्जाम्पल मत लिखो, एक पॉइंट रुको, मैं एक पॉइंट बोलता. ये टेबल लिखे. ये सर टेबल लिखे ना, नीचे एक लाइन लिखो. ऑन मैच्योरिटी, comma, maturity amount is exempt. On maturity, comma, maturity amount is exempt if premium payable does not exceed the above mentioned percent. Wait. Does not exceed 20% slash 20% by slash. समझ गए ना? 20% or 10% or 15% of sum assured. समझ गए ना बेटा? चलो, ऊपर का क्या है? कौन लिख रहा है टेबल अभी? Who's writing table still?
लिख के जाओ बेटा, लिखो 2 मिनट, क्या फर्क पड़ेगा 2 मिनट में। क्या बेटा, उस टाइम पास करने से अच्छा 2 मिनट में लिखते थे अब तब तक। इस पे इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि समझ के लिखते हैं उसमें इतना। वही शो ऑफ कर रहा मिस्टर प्रज्वल। नॉर्मल मिस नहीं कर रहा हूं, हम क्रिकेट खेल रहे थे, कंटिन्यू फोन पे फोन, फोन पे फोन। क्या भाई, क्या फ्रीडम है तेरा लाइफ में? थर्ड वाला, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पहले लिखो, पहले लिखो, लिखो लिखो, खत्म करो। सम अश्योर्ड बेटा, सम अश्योर्ड। सारे चीटिंग है सारे बदो बनाएगा और यार ऊपर से थोड़ा सा ऊपर सर नीचे ले रहे सर ऊपर रुक बाय बेटा, सी यू, कैरी ऑन। चलो, सी यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर, सी यू टुमारो। Thank you, beta. Thank you. See you tomorrow. Thank you, guys. Take care. See you all tomorrow in the morning. Thank you. And tomorrow, please ensure to carry your module 2. Very, very important. And module 1 का कल जरूरत नहीं है, सिर्फ module 2 लेके आ जाओ कंपलसरी। Done. Thank you so much, guys. Take care. Bye bye.